So first of all, a very good afternoon to one and all. I, Palak Sharma, welcome you all at 11th day of the WAC program. Before I take to the pleasure of introducing our keynote speaker, I would like to publicly express my gratitude to Professor Balvinder Shukla ma'am, Professor K.V. Ravi Kumar sir, Dr. Shipra ma'am and Dr. Jyoti Singh and our coordinating committee for their hard work in planning the WAC program. I also want to thank them for bringing together such a fine group of personalities to address their achievements. So, our today's keynote speaker, Dr. Prashant Dutt, is a highly qualified and experienced chemist with a PhD and a PG in instrumentation techniques. With over 20 published research papers in the fields of chemistry and food science, he has attended numerous national and international seminars and symposia where he has presented his research findings. Dr. Dutt has worked as a research and analytical chemist in both pharmaceutical industry and the food and drug division's regulatory laboratories for a period of almost 8 years. He has undertaken various training programs in the analysis and estimation of mycotoxins and aflatoxins. 25 years of vast experience in the promotion of analytical instruments, handled various chromatography, spectroscopy, and material characterization techniques, trained on various techniques at USA, Europe, especially Italy, France, Germany, Austria, at manufacturer application laboratories. Currently, Dr. Dutt heading the Shiva Global Technos, which deals with laboratory instruments in forensic science laboratories, DRDO, and ICAR organizations. Now, Dr. Dutt will enlighten us with his profound knowledge and expertise in their field. Please join us in giving a warm welcome to Dr. Dutt as he takes the stage to deliver his keynote address. Over to you, sir. Hello, thank you, madam. Thank you to all of you, and good afternoon to all my friends, students of MIT universities, and everybody. We will discuss today. Today we will discuss about the techniques available in forensic science with a special reference to question document examination. As first of all, I would like to say that forensic science, any analytical technologies, or you can say examination of forensic evidence, is entirely different from the other spheres of you can say, science or regulatory bodies like food and drug analysis, water analysis, or you can say food and drug analysis, water analysis, or industrial analysis. Because in food and drug analysis, to certain manuals called as pharmacopoeias, and you are simply doing your analysis with a special reference to with the guide pharmacopoeia or food analysis manual. The same way in water analysis, there are certain manual by various national and international agencies. So you are doing your analysis. And when you are in industries, you are directed by the ASTM methods. So they are well-defined methods. But in contrast to this, when we come to forensic science, there is no simple manual is there, no simple guideline is there. One has to start from the scratch and move to the highest and adaptation available to him. Sometimes he has to refer the basic books. When I take in the forensic and he doesn't know what is this, and he doesn't know what he has to do this, but he has to find out. So what he start with the basic, right from a chemist knows the group analysis, then he has to move to the spectroscopy and advanced spectroscopy and chromatography. So this is entirely different forensic science. So forensic science, so the scientist who is engaged in the forensic analysis, forensic investigation and laboratory investigation, he must have good presence of mind with the, you can say, strongest background of the subject and chemistry. So this is the difference. And when I come to document analysis, one of the, you can say, one of the different part, because in chromatography you have the, like, if you have the
support your suppose your suspicions or whatever assumptions. You have so many techniques, you have so many libraries are there, but in document analysis, it is 80% is depending upon it is like artist, and which he learned by the experience, not simply by going through some books. He cannot learn it. He cannot be a good forensic document examiner. He has to have a sufficient experience, and then he must have a background of chemistry, background of physics, so that he can apply the instrumentation as and where it is required. So we will be covering today, and as Ravi Kumar sir, what he gave the idea that to just coin my talk around quantitative, quantitative, and mixed method of research. So I'll be covering this not from forensic angle or forensic you can say examiner angle. I'll be covering as a chemist, and how these techniques can be applied in a question document examination. Most of the techniques are being used successfully. Few of the techniques are relatively in an infant stage, you can say infant stage, or you can say it is in a teaching stage. People have started using, but not you can say regularly they are in use. But yes, in coming years they will be used extensively for the question document examination, or the you can say or the question document examination, or whatever is integrated into the question document examination, like from the ink and the paper and the pulp and the polymers. Because now a question document examination not merely confined to the handwriting, it is to the printing, and when it is to the printing, it is to the substrate, means papers and polymers coatings, and the like in the plastic cards and everything, plastic sheets. So we have to cover polymer, we have to cover paper and pulp, we have to cover ink, production ink basically chemistry of it, and then of course writing, printing, typing, etc. So we'll be covering everything in this technique. So now we'll start. So as our topic is analytical technologies for the examination of question documents in forensic science. Purpose, and now what is the purpose? And method, purpose and method for question document examination. Question documents are examined and analyzed with the aim to identify forged and falsified security document and non-security document, to detect the fraudulent document, both altered and counterfeited documents, determine the authenticity of security features, determine the authenticity of the document by comparing with non-standards, determine the author of signatures, handwriting of individual handwriting habits, characteristics based on one or two characteristics, but it is based on the combination of significant characteristics in agreement between question and non-writing, and handwriting is identifiable to the individual writer. Identify methods used to alter documents and to produce counterfeit documents, and it provide intelligence information, provide advice for development of new security features for identity and security documents, and provide other relevant information related to content of the document. So these are the basically objectives. Mainly in any forensic science laboratories, they especially when are covering in forensic science laboratories, they are simply doing the handwriting analysis, printing analysis, but they are not engaged in the about that whether and security features. That is a part of research which some CFSLs are supposed to do, or supposed to advise the bank note press or the other you can say secure organization, those are printing the security documents, what kind of new features has to be added, and to study the pulping process, paper quality, etc. Hello, are you getting my voice? Hello, getting my voice? Yes, sir, you are audible. Yeah.
because sometimes it is okay. And approaches adopted in question document examination. In question document examination, a forensic document examiner uses the range of prevalent analytical equipments or instruments and certain specialized forensic equipments, right from basic to advanced, to carry out the examination. Most of the examinations involves a comparison between question document and the genuine document, which considered, and genuine document is considered as a reference, because in analytical science you have to have a reference, maybe a basically pure solutions or pure chemical, but in this case pure solution replaces the genuine documents, so which considered to be as a reference standards. Common reference standard collection include those of passports and currency as well as security documents. And when we come into the passport and securities, there are so many international organizations, those are providing you the database of international passports of every country passport, their security feature and currency of almost all countries, and there is security features, and they're named as Regula, that is a basically South, you can say South African company, and Keesing American company. They collect the database, they share the database on chargeable basis to the forensic science laboratories, to the other research organizations. Those are involved in the security and basically security research, the document security research applications. And this is as well as available to the all, you can say, printing agencies or security printing presses, etc. The authenticity determination and assessment of the identity of security document is normally carried out on the basis of certain primary security features. Those are integrated into the security document, and some of the features are visible on the computer, and some of the documents are basically visible with the naked eyes, and some of the features require some certain specific tools. Like for the basic examination purpose, you see this is a basically light source. This is again the you can say this is a magnifier glass with certain distance. This is the UV light. So there are UV light 265 nanometer, 365 nanometer, 350 nanometer. These are called short UV, long UV, and mid UV are required. Then these are retroviewer for the laminate, and these are the gauges. These are the magnifier with the basically certain you can say denomination, so enlargement and measurement purpose, magnifying glass, etc. So these are the basic tools every question document examiner keeps. Not only this, where if you go into this, most of the cases, some freelancer people, those are doing analysis in the court and in the court of law, they also use this equipment extensively, some lawyers also. And these are little advanced. Mainly you will find in a forensic science laboratory or forensic science organization. Like this is a basically some magnifier with the certain lights, UV lights, visible lights, IR lights. Every light has its own, you can say, so these the LEDs for UV, LEDs for visible, LEDs for IR. So these are the switches, and this is the 10x to 140x magnification. These can be viewable by the eyes also, and these can be integrated with the computer with the software. And if you have a software, you have the, you can say so many you can say, you can do so many manifestation with that you can superimpose, compare, and layer, etc. application you can do. This is a retroviewer, again this for the lamination studies. And then there are repro stands. So there are certain lights, and this is a camera, normally DSLR camera, digital camera. So camera take the photographs, different light arrangement, side light arrangement for the retro features. And stages you can do in a reflective mode analysis. And there is in the bottom, there is also light for the transmission mode analysis, like watermarks, etc. The see-through features can be seen from the bottom lights. So these are the little advanced, but most of the laboratories, and most of the laboratories, not only laboratory, most of the individual examiner is having in every laboratory one set of each. Then there are advanced document advanced forensic document examination. So advanced instrumentation. Now advanced instrumentation, like we discussed, there are certain features, those are observable by the naked eyes, or with the, you can say with the computer screen, or certain light arrangement, but ultimately you are viewing through the, basically you are viewing through your eyes only. You have the features, you have the lights,
And in this case, advanced features, you require some instrumentation like substrate characteristics. Nowadays, substrate could be a paper and polymers. Polymer means like plastic cards, plastic currency, like you can say some passes. And then paper is a basically pulp and paper, and paper sometimes they have a glazziness of paper, some polymer coatings are there for substrate characteristic. So there is a substrate characteristic, so many instrumentation is applied, which we will cover in the in the coming slides. But to say for the paper, like a paper is whether is a paper is yellow in color, it is getting pale property. When we buy a paper, it is a extremely white, and over the period of time it become pale, it become yellowish. So what is the chemistry behind that? Chemistry that paper get oxidized. So oxidized means, because we know that when we are making any paper, so we are doing a bleaching process to give the whiteness, and over the period of time whiteness goes on and become little, you can say, pale in color, or it become yellow in color. So what is that? There is a chemistry behind that. It gets oxidized, because when we are doing a bleaching, we have a sufficient bleaching means we are using chlorinating the paper. So we can do the chlorine analysis, which is an instrument called AX analyzer, for the which do the chlorine estimation. So by that, over the time, the things are reducing, and we can see that. And the sample polymers, we can see so many polymeric property like phase transition, glass transition, etc. So we can identify the what kind of polymer are there. When we come to the ink characterization, normally in ink characterization, like a experienced forensic examiner is normally doing the non-destructive examination of ink. The non-destructive examination means you are not destructing the you can say document. You are simply using that document, visualizing it with the help of your eyes or with the help of instrument. So when you have to the eyes, you have an alternating light source, as we discussed, which is having short UV, long UV, mid UV, or even IR also. IR lights are also there. So there are so many properties. Those are visible with the IR light, like basically. Then there are UV absorbing feature with the UV light, and those are in a white light. You can see colored features. So you can see the document under infrared absorption, infrared reflectance, and infrared luminescence. And the same way UV lighting printing process and features. And then we have to analyze the feature from the point of development of security feature in ink. This is basically like forensic research organization do the research and or they give the consultation to the you can say banknote printing press, and there is a kind of security feature should be there. That and security feature with respect to the substrate, with kind of ink they have to use, and because ink is also for ink purpose, you have to see the physical property of ink, that how this ink is just flowing through on the paper. So that is a property is called sagging, whether when you have how it is paper, and what kind of paper has to be used, or what kind of ink, or we have a specific paper, then what kind of ink has to be there, and what is the behavior of ink, and what kind of target has to be put in the. For that purpose, you have to have the rheometers. Then primary and advanced security features, overt and covert kind of security features, those are integrated into the security document or currencies, etc. And then distinguish and to distinguish that between different printing processes. Anti-glue printing are there, embossing printing are there. So what kind of printing, what kind of feature has to be added. Then we have to have a physical characteristic of the document, like assembly and production characteristics, substrate production, like when we have a paper, what pulping process was used in the paper. So that pulping process also give us the idea, the source of the origin of the paper. Because when you have because every paper mill or every paper producing organization, they have a different pulping process. This is production process, and if it is printed on paper, if you have a similar kind of features, putting the security feature and pulping process is different, that will react in a different way. So we can identify not only the by the pulping process, the paper, and also the source of that. Then quality parameters like paper and polymers, like you have a paper, then
what are the basically or polymers. If you have a plastic papers or plastic sheet or paper with the polymer, the creep and recovery, when you fold it, how much time it takes to the, how much force you have to put into the fold it, and when you remove the force, how much it is recovered and how much still it is folded. So it is called as creep and recovery. These kind of paper, these kind of parameters. Then tensile strength of the paper, tensile strength of the polymer, Young modulus of the polymer, elasticity of the polymers. And when you if it is a ink, it is a basically shear stress, and it is a basically shear modulus, etc. So these are the parameters, those are applied during the development process. Then electronic media, smart chip, magnetic strip, machine readable zones, etc. So there are so many features are there and so many instrument comes. As far as analytical technique employed in forensic document examination, we can just divide the techniques for investigation into two parts. Some are destructive methods, another are not destructive method. Destructive method means where you are destructing, where you are utilizing, destructing your exhibit. Means you have to take the risk that your evidence, whatever your exhibit, which is a part of result, is getting exhausted. You don't have that, but still, if technique requires, you have to have. So destructive methods are there. TLC. TLC is thin layer chromatography. It is the simplest form of chromatography and cheapest form of chromatography. That doesn't require a large instrumentation. You require some troughs, some chambers, then chemicals, solutions, and it is mainly used for the ink analysis, separation of ink, and then qualitative analysis of ink. And if you want to do quantification of that ink, or if you want to do the quantification, then you have to move on the high performance thin layer chromatography, which is the advanced part of TLC, wherein you can do the quantitative manner application of the sample or the ink or the pigment on the dye on the paper or the plate, and then you have to do the quantification with the help of densitometer and scanners. And then you have a software to integrate the quantification. If it's a qualitative TLC, it is a quantitative TLC, it is a TLC paper, it should be a paper chromatography or thin layer chromatography. If it is a quantitative TLC, then it is a FPTLC, wherein you have a quantitatively manner, you can put the sample, you can apply the sample on the plate. In a quantitative manner, you can do the development with an advanced development chamber in gradient mode or in an isocratic mode, and then quantification with the help of scanning, densitometry. Then you have a gas chromatography, again for ink analysis, and only ink is a basically part of basically you can say dye or pigment and vehicles, which is a solvent. And sometimes it is a glue also, if you are a paint also, or some sticking purpose. Then to differentiate the various component, you have a basically gas chromatography technique. You have to separate it in a column, and then you have to analyze with the various detector available, like a flame ionization detector or some other specific detector. In case of HPLC, where there is something thermal sensitive, which may become you can say which may become deteriorate with the on applying the temperature or vaporizing it, or maybe disintegrate. In that case, at low temperature, room temperature, you do the separation as a liquid, and then it is called as a liquid chromatography or high performance liquid chromatography. And these high performance chromatography or TLC chromatographies are the very much, you can say, very much technique in practice, and almost all forensic science laboratory, whether it is state or central, or all the research software for the purpose of ink and solvent analysis. Then atomic absorption spectrometer. This is a technique which is trace metal analysis. So when we have to the ink, we have to do the you can say traces of metal available in ink. So for that purpose, we use an atomic absorption spectrophotometer, AS, which is a part of a photometry, wherein you put some light to the sample, and if metals are there, traces of metals are there, they will absorb the light and give the basically a meaningful result in the form of you can say concentration per ppb to ppm level. Then there is a differential scanning colorimetry. This is again for ink analysis and polymer analysis to see the glass transition, phase transition, and the basically phase change of the any paper, polymer, and ink. Now there is another technique. Recently we have seen certain references, a Kelvin probe.
Kelvin probe system, this is a part of normally people involved or chemistry are not much related to that, but in physics, those are people, those are research of semiconductor material, those are research of photovoltaic material. They know about Kelvin probe technique. Kelvin probe technique, suppose I am using something, I'm writing something, I have a metallic, I have something like say metallic, you can say metallic plate, and I put some paper and wrote on the paper, and metallic tray is there, metallic plate is there, and I destroy the paper, but plate is there. In this technique, we can use that plate, we can apply the current to that plate, we can apply the potential with some sort of a probe, Kelvin probe system, and there is a potential difference between the metal plate and probe, and we can find out, and I will show you some papers on that, and we can find out what was written, and you can just take the photograph of that and you can have the record. So sometimes somebody thinks that I have destroyed every evidence. I put a paper on a, you can say, metal plate, and I wrote something and I destroyed the paper, but still everything can be recovered. Then X-ray fluorescence spectroscopy. Again, this is for the, you can say, analysis. This is for the analysis of the basically substrate, and then basically metal analysis. You can say trace metal analysis. The similar with the laser-induced breakdown spectroscopy. These are the technique prevalently. These are extensively used in forensic science in various other divisions, and they have the application in question documents also, or the question document examination also. Then, as we discussed, absorbable organic halide paper quality. Again, this technology to see the paper quality and pulping process. Then mass spectroscopy, again, mass spectroscopy alone is not used. Mass spectroscopy is integrated either with gas chromatography and HPLC. So where we have a mass spectrometer used as a detector on the basis of charge to mass ratio of the analyte. So it is a more advanced tool, more confirmatory tool. And in mass spectroscopy, what is the advantage? We have the libraries available. So third-party libraries are there from various organizations like Georgia State Crime Library, like you can say Merck Library, Sigma Library, Entis Library. So you are doing separating the component with the help of HPLC, separating the component with the help of HPD GC, and then you have adding with the mass spectrometer, and then the whatever results are there, you can compare with mass spectroscopy, and you can identify, quantify as well identify. Then rheology is there. Again, the fluidic property, flow property of any ink or melt of polymer. Melt of polymer means it is a basically your polymer treatment. So these are the equipments. Now I come to non-destructive method. Non-destructive method could be a digital microscopy. Everybody is aware of that. It is a basically now it is a basically handy and available to everybody. Like even your mobile will do like a digital microscopy, a digital microscope. Then we have a digital microscopy. A digital microscope is normally having a microscope and camera are integrated together with the digital USB output. They come with the software to allow the display of image to monitor a LCD projector and or simultaneous recording of single images or a series of time-lapse images, or a time-lapse movie or a digital movie. Normally, there are two kinds of digital camera exist in the market, basically. And one is a basically CMOS camera, another is a basically pixels camera, pixelate camera. Then optical microscopy. Then we come on optical microscopy. Optical microscopy. Optical microscopy. Optical microscopy includes the various type of microscope, right from the stereo microscope to combined microscope to phase contrast microscope to comparison microscope to scanning electron microscope. Microscopy basically it is having the element like a basically eyepiece, magnifier glass. You are putting the photon, and in turn you get the reading. Okay, so optical microscopy is a vast subject. We will covering after that. Then video spectral comparator. This is a you can say a very much you can popularize tool. Video spectral comparator means basically you are doing a basically it includes basically again optical components
And it includes the basically digital microscope, optical microscope, their video images, and do the analysis with the help of software. After that, we have a Fourier transform infrared spectroscopy. This Fourier transform infrared spectroscopy, commonly known as FTIR. FTIR is a basically earlier we used to say it is a IR, means infrared spectrometer. It is a part of spectrophotometry, and spectrophotometry is science where you are exposing the material to light and see the property against the photon or light and do the analysis. And if you have an electromagnetic region, if you are using basically infrared region, it is called as a FTIR. So FTIR spectrophotometry is there, but what is the advancement? Now you need not to have the sample in a basically powder form or crystal form. You can do your exhibit straight away. It could be a page, it could be a polymer film, it could be a glass, it could be anything, it could be a powder, it could be a liquid. You can do, and not many you can say it could do. You can do in a transmission mode also and reflectance mode also, and attenuated total reflectance also. So any kind of object can be brought to that, and not only brought to that, FTIRs are there, handheld and portable. Those can be brought to the scene of crime, or that can be brought to the or directly on the substrate. So you need not to basically otherwise it was a before few years back it was a basically a destructive technique, but it has come into non-destructive with the availability of so many modes. So you can do the FTIR, and especially this will be done in the ink analysis and substrate analysis. Then UV visible spectroscopy, again the ink analysis, color analysis, and it is a non-destructive technique with a basically with the so many reflectors mode. Then Raman scattering is there. Raman is there. We will also cover Raman spectrophotometry, wherein because when you have any sample, you throw some light on that, it will absorb the light or it will reflect the light. If it will absorb the light, we will see the absorption spectrophotometry. If it will reflect the light, it will be a basically reflectance spectroscopy. But there is a third phenomenon: neither it will absorb nor will reflect; it will scatter the light, and the either of same wavelength and different wavelength. So we see the scattering phenomena of light over some exhibit or object, and that spectroscopy part is called as a Raman scattering. Then there is advancement of the surface enhanced resonance Raman spectrometry. So this is another form. Then we have certain hyphenated technique, means you have the combination of technique like chromatography and FTIR. Means chromatography means you have a separation technique, then quantification technique. Separation technique, quantification technique. Then scanning electron microscopy. This is a basically visualization technique, magnification technique, and with the quantification, because with any microscope you cannot quantify anything. You can see, you can enlarge either 10x, 20x, 100x, or 1 millionx with the help of scanning electron microscope. But you can see the image. But if you want to see what is the image, what is there in image, what is the constituent of image, what is the chemical which is creating the image, then you can target particular point and you can take the X-ray of that particular point and fluorescence X-ray of that particular point. So that is called as a SAM-EDX. Then if you have something like polymer, if you have some layers are there, some 2-3 layers are there, because X-ray has a limitation of more than it cannot penetrate any layer below than 20 micrometer. Then you have the laser-induced breakdown spectroscopy. Well, further advancement of that, similar to that, you are using laser source instead of X-ray source. Then you have a basically EPM, another technique, then PEM, electronic microscopy with the Kelvin probe. So these are the basically combination of that. Then of course you have a microscope with the Raman spectrometry. So you select the point and take the Raman spectra. You select the point, take the FTIR spectra. You select the point, take the MS spectra. So microscope with that. Then microspectrophotometer, wherein you are integrating a microscope with the spectrophotometer. So purpose of these technique is there. In first two technique, you are separating the technique, then quantifying, and the last 5 technique, you are enlarging the point of your interest, region of your interest, point of your interest, and then you are taking the spectra or you are quantifying that particular point on your paper or your document or your tool, on your exhibit.
Now we come in a non-destructive technique. As we discussed non-destructive technique in our last slide, non-destructive digital microscopy, optical microscopy, spectral microscopy. So how to differentiate? These are all basically all are non-destructive technique. There is a further, you can say segmentation in these non-destructive technique, because optical, we have to decide what technique we have to use if it is a non-destructive. Not essentially we can use any technique. We have to recognize the need to choose the particular technique. So for that purpose, we have divided these techniques into two parts. Those are wide field of view technique. Those are point mapping technique. Wide field of view technique, wherein we can see the image only. Wide field of view with the eyes, with the help of magnifier, we can see the image, but we cannot quantify the image, or we cannot quantify the image, or the any particular portion of the image. So wide field of technique, because the all non-destructive technique, they are divided. Wide field of view, like digital microscope, is a wide field of view. We can simply see it. In the optical microscopy, of course, we can see it. We can magnify up to 100x, up to 1000x with the help of some optical microscopes, optical components, or video spectral comparator. We can see the video, we can see the image, but we can see the whole image. But point mapping technique, on any part of image, if you want to do some sort of mapping, if you want to do some sort of quantification, then we have a Fourier transform infrared spectrophotometer, ultraviolet visible spectroscopy or spectrophotometer, or Raman spectrometer. So this is a basically categorization. Now you come on the optical. Digital microscope means, as I said, digital microscopes are there. As we discussed, they are available. Then we come on the optical microscopy. In optical microscopy, we have so many kind of microscope. There is one is a stereo microscope, then compound microscope, polarizing microscope, comparison microscope, electron microscope, and microspectrophotometer. In stereo microscope, basically these are the simplest form of microscope, wherein we are, in most of the cases, we are basically the beam which are just putting on the objects, we are dividing in a way that it gives a three-dimensional view, or it gives a three-dimensional picture. So it is a stereo microscope. If we have to see any object in three-dimensional mode, we use a stereo microscope, and it is a very common and non-expensive technique. But the limitation is that normally all the stereo microscopes are going up to 100x, or at the most 125x. But if you have to further enlarge, so it is not possible with the stereo microscope. For that purpose, we have to move on a compound microscope. And after that, we have a compound microscope. After that, we have a polarizing microscope. So light which we are applying onto the object, we are polarizing the light, we have a polarizer and then depolarizer. So ultimately, we are quantifying the polarization also, and seeing the object in a polarized light, and then we know how much polarization was done. So these are the polarizing microscope. Then we have a comparison microscope. Comparison microscope is nothing but it is a basically combination of two combined microscope with the help of one, you can say, one probe, which is called as a comparison bridge. One basically bridge which is called as a comparison bridge. Then electron microscopes are there, where up to the 1 lakh magnification or 1 million magnifications are there. Like this is stereo microscope. Typical stereo microscopes, it is a binocular because there are two ocular there, two eyepieces are there, and in bottom there is a basically, if you say bottom, there is one lens. It could be a different, you can say 10x, 10x, 5x, etc. And there is an eyepiece, and with the combination of that, you do the basically the magnifications. And these are come nowadays. These are also coming as a trinocular. So there is a third place for the eyepiece, but that eyepiece place is used for the, you can say, digital camera. So they are a trinocular, so two for eyepiece and another for the digital camera. So you can see the image, you can intensify the image, you can see, and then you can, if you have a trinocular microscope with the digital camera, you can record the image, and further you can do that you can say digital magnification also, depending upon the computer screen, how big computer screen you have.
So as we discussed, any stereo microscope is having a two compound microscopes which are aligned side by side at the correct visual angle to provide a true spectroscopy image. The long working distance between the specimen and object lenses, upright non-reverse images, and large field of view make these instruments of choice for performing preliminary examination of evidence as well as manipulating small particles and fiber to prepare the more dedicated microscopic or instrumental analysis of composition. As I said, magnification possible is around 100x or 125x. Stereoscopic microscope is actually two monocular compound microscope, as I discussed, properly spaced and aligned to present three-dimensional image of the specimen to viewer who look through the 10 to 125x. If the large working depth make it quite applicable for the microscope examination of that. This is a compound microscope. Again, these compound microscopes are available, and now they are available as a trinocular also. So in this, you can see this is the ocular or eyepiece. This have a standard magnification. Normally they are at 10x, and you have different. You can say different. You can say magnifiers are there, 10x, 100x, 50x, even 0.5x. So you can view that this is called as a turret revolving assembly. This is called as a turret or revolving assembly. So you can choose as per your magnification requirement. You can use that magnifier, and then ocular. This is the fix, and with the you can say with the basically multiplication, you get the multiplication, you get the basically magnification. But the difference is that you cannot normally make it too much up and down as it was possible in the stereo microscope. But the advantage is that you can have the magnification. You have so many, you can say magnifier pieces are there you can use. And again, microscope, we have to see the basically optical part also. When we are talking about the optics, what kind of optics is there, what kind of glass lenses are there. There are like apochromatic or you are achromatic lens, plan, semi-plan, non-plan. So apochromatic lenses are considered to be the best and very expensive. So when we have to go for a microscope buying, we have to see about whether achromatic lens or apochromatic lens or you can say semi-plan or semi-achromatic or semi-apochromatic, because lenses, what kind of lenses are there, and again, what are the properties. The most common part of microscopy is a bright field microscopy. Normally what we see is a bright field. So everything, whatever beneath the, you can say beneath the magnifier glass, beneath the position of magnifier glass, we are keeping, that is called as a bright field, and outside of area we are not interested. And reverse to that is a dark microscopy, dark field. Dark field means you are when you see something on the border area, then you feel dark field, or normally otherwise we see the bright field. In dark field, in bright field, we are not able to recognize on the borders. These are the borders. But in contrast to this, that is a basically dark field when you see the borders, and you have to select the mode, and you can see the dark field mode also. Then other forms are there: diffusion illuminations, phase contrast microscopy, then polarizing light microscopes are there. Light microscopes. You can see the property of glass, crystal, and fiber. The sample absorb the light differently depending upon the orientation of polarized light. So polarizing microscopes are there. So these are the microscopy. Then you have a fluorescence microscopy. You can see the fluorescence also. Fluorescence microscopy, fluorescence illumination and observation is the most rapidly expanding microscopy technique employed today in the forensic investigation, effect which has inspired the development of more sophisticated microscope and fluorescence accessories. Fluorescence occurs when susceptible molecules emit light from electronically excited states created either physical, mechanical, or chemical mechanism. So fluorescence is basically, it is used in when I am talking about question document, it is for the ink analysis, fluorescence microscopy. Then again, fluorescence microscopy, another you can say advancement, EP fluorescence and confocal microscopy. And now we come about the
most common is the comparison microscopes. So this is a comparison microscope. So this is the equipment which is a basically combination of two compound microscopes. So if you see, there are two compound microscopes and there is one comparison bridge. Here there is a comparison bridge. The role of comparison bridge is to pick the images simultaneously from both the microscope and to present you in a same view. So comparison bridge role is to select the image to present you, and it can be either 50-50 on the images, 80-20, 0-100, either one side it will take left image, right image, or 50-50 image in same screen, or 80-20 or superimposition. So this is a comparison. And again, these are the, it's seen for, if you are seeing by the eyes, the binocular, but in forensic investigation, when there are two people want to observe, so there are basically, this is for the one person, this for another person, two persons simultaneously can view. And if it is for a large audience, or it has to be stored, then you have to have a basically a digital camera. So there is a space for digital camera on that. In this case, you can see on the computer monitor. So this is the comparison microscopes, and this is a very much essential requirement in any forensic science laboratory, and almost it requires in basically in ballistic division and in document division. In the comparison microscope, comparison bridge, it allows you, comparison bridge allows you 100% left image, 100% right image, split the image, 80-20 image, 20-20 image, any split image, same image can be split, or you can just superimpose the image. And you have to have the, basically there are in optics, you have to have the numerical aperture, which is a basically, you can say, show the quality of the microscope, 22 field number, then different type of. And the lenses normally in comparison microscope, good quality comparison research microscope, have the highest level of optics, which is a apochromatic objectives, or magnifier means they are objectives. Then you have to have, in microscopy, most of the time you are doing in a reflectance mode. Very few you are doing a transmission mode, and documents only see-through features you are doing in a transmission mode. Otherwise you are doing in a reflectance mode. And reflectance mode means you are throwing various kind of lights, device for various kind of application, or the spectra, and you record the image or see the image either with the help of oculars, eyepieces, or through the digital camera. So lights are there for special purpose. Fluorescent lights are there. Then you have the LED lights, different LED lights like IR light. It could be a visible light, white light, visible light, IR lights, and the you can say NIR lights, or you can say UV lights. This is a spotlight. If you want to intensify particular feature, you can spot the light on that. And this is a basically UV light, and this is a coaxial light. When coaxial light in comparison microscope, there are certain comparison microscope which come with a stereo zoom kind of optics, because where you can have a coaxial light, different, you can say LED lights are there in full circular, right from the UV to infrared region, and you can see the object in various light. Then for that purpose, you have to have the holder reflecting, because if you have to put some piece of paper, piece of glass, piece of plastic, and you have to put that. So you have some object holder is there, ball pivot positioner. You just put on the, instead of that where you're putting your, you can say your exhibit, and you can keep it there. And then in reflectance mode, you can see. Then you have a basically another holder. This is for holding the currency notes and the papers. Then you have for the transmission characteristics. If you have something you want to see the see-through feature, you put it here. Inside there is a light, and then you can see what light is it passing through. Then you are not applying the light necessarily. You are not applying the light. You can see the feature. But the thing is that so
in this case, this is the basically for this is the basically when we are using a forensic science. So when we are using in a document examination, normally we use we are not using with the basically the comparison microscope with these kind of objective kind of basically comparison microscope. For that purpose, we use these kind of you can say objectives, where the single objectives like a stereo microscope kind of that, and we do the analysis of that. So this is a typical comparison microscope. Then we come to the scanning electron microscope. The scanning, a typical scanning electron microscope. Scanning electron microscope, they are different from the other microscope. Is that in other microscope we are just throwing the light over the exhibit. Either we are passing the light or we are throwing the light over the exhibit. It could be a white light, which with the help of the halogen lamp. It could be a basically UV light with the or it could be a spotlight, or it could be a basically a UV to NIR light. But we are throwing the light, and we are just recording we are just viewing the images or recording the images. But in electron microscopy, we are not basically throwing the light. We are just bombarding the specimen with the beam of electron instead of light to produce a highly magnified images. So magnification, normally in any compound microscope, we get the magnification maybe up to 1000x, maybe 2000x, not more than that. But when we go into the electron microscope, we get the magnification in the 100,000 x magnification, 1 million magnifications. So these are very advanced, but we are not using the light in that case. We are using the electron. So we are bombarding the specimen with the electron, which produce the X-ray emissions, and that can be used to characterize the element present in the material investigation. So this is a basically electron microscope. If the depth of focus is same, it is a 300 times better than the optical system. Magnification up to 2 millimicron and several thousand times the real size of the object. Then scanning electron microscopes. Then the microspectrophotometer. These are the microspectrophotometer. These are nowadays extensively applied in a forensic document examination for the ink analysis. The microspectrophotometer is a spectrophotometer coupled with a light microscope. The microspectrophotometer is used to measure the spectra of microscopic sample. For example, a forensic scientist will use one analysis in dyes in a single textile fiber. And to measure the spectra, you want to see the fiber, and you take suppose if you just first of all you see on in a microscope and a fiber or a fiber which is colored in a dye, you single out one particular fiber, and then at particular point you target the light and you see the spectra of that. So this is a microspectrophotometer. So microspectrophotometers are extensively used in the analysis. Commercially available microspectrophotometers are covering the range from UV to visible to NIR. UV is basically for UV absorbing feature, visible for normal color, IR for the specifically features. There are certain dyes are there, indigo dyes are there. They are not, you cannot quantify them. For that purpose, you have a IR radiation, or even like if you have some like of you can say some there are certain, you can say certain anti-Stokings are there. Anti-Stokes features are there. So anti-Stokings, they only respond at 900 nanometer. For that purpose, this covers a full range UV to NIR. So you are, first of all, you are enhancing it
magnifying it, single outing a particular dyed crystal, and then on particular point you see the spectra. So this is basically microspectrophotometer. Now again we have a non-destructive, what we discussed earlier. We discussed at that time non-destructive technique, first of all wide field of view, and then it was in a basically point mapping. Now again we are coming on a point mapping and wide field of view. Again, what is wide field of view? Quantitative and qualitative. So where all the optical spectroscopy, that is a qualitative wide field of view. For quantitative, we can discuss in a FTIR, we can discuss IR, we can discuss UV visible, we can discuss something like that. And non-linear, this is out of scope. This is a further very high research. Normally, this are basically not necessarily basically prevalent in nowadays, but still it is there for other research purpose. And the linear spectroscopy is a basically reflectance mode analysis. As I said, in ink analysis, most of the analysis you do in the reflectance mode. Then transmission mode for the solution analysis, for the see-through material transmission mode, absorbance analysis, see-through material transmission mode, luminescence for the material, those are given some sort of luminescence, either instant or delayed, particularly ink and some tagans. Luminescence analysis, Raman for the scattering. Nowadays, you must have heard a hyperspectral, because earlier we used to say, first of all, we used to say that, okay, it is a hyperspectral. New terminology has been introduced around 10 years ago. Earlier it was classified, it was with the NASA. They used to have in the airborne studies and the satellites, they used to use hyperspectral imaging. Because when we say imaging, and imaging is basically to view any picture. Spectral means you take the spectra. So normally hyperspectral space imaging, hyper means higher, advanced. Spectral means you take the spectroscopy, means you can measure at particular point concentration. Imaging means to see the picture, because microscopy is always imaging. Photography is a imaging. When you a particular point of image, if you want to see the quantification of particular point, then it is a spectra. And when you hit a hyper means advanced, numerous. So hyperspectral imaging has come. It is a new technology, and extensively earlier it was in the basically NASA, it was in the basically airborne studies, or in the basically topographic analysis for the spying purpose or for the agriculture or remote application. But around 15 years ago, it was introduced in the forensic science, especially in document examination, because document examination is the only science in forensic investigation where most of the analysis we are doing we are doing on the basis of topography, on the basis of upper part of the image, topography. Because in other part you can do you can destruct the image, you can do various kind of analysis, but in question document you have to do, in the document analysis you have to do the topography, means reflectance mode most of the time, and reflectance or fluorescence. So this is a basically hyperspectral imaging. So what happened? What is spectral imaging? This is some image. If you see, this is a flower. By the eyes or by the camera or by the microscope, you can see X and Y direction. So this is a two-dimensional. This is a spatial sampling. So this is a basically imaging. We see the image, but at particular point, if I want to see the color at this point, if I want to see the spectra of this point, I have to have the then I have to take the spectra. So this is a spectroscopy. So when hyperspectral imaging means I take the photograph and I do the basically spectroscopy of particular point. And when hyperspectral means when I take so many images at either at different extended field of view or at different wavelength, and I'm putting the image, then I do the hyperspectral. So this is a one image spectral at particular wavelength. You are taking a spectra of one point of image at another particular wavelength, you take the spectra and you are putting the images. So this is going to the hyperspectral imaging. Like a spectral imaging photograph, this is doing with a black and white camera. You have a spectra, you have an image. With a black and white camera, you have black and white image. Then you have a traditional RGB camera, means red, green, blue, normal photography, XYZ color, where you take red, green, blue colors. So you have a traditional color camera. And then spectral imaging,
you take the spectra, you take the photograph, and you just make the file. There's something like that. Is more black and white image, color image, and then you take the multiple image and the hyperspectral. So what happened? Any object normally we see in x and y coordinate, z coordinate, we are putting the wavelength, take the images very frequently with the certain specialized camera, hyperspectral camera or multispectral camera. If we take around 20 images in a second, then it is called as a basically multispectral image or multispectral image. And when we take with the specialized hyperspectral camera 100 images, 50 images in a second, then it is called as a spectral imaging, hyperspectral imaging. And when you are putting each image one over top and you make a cube, which is called as spectra cube. In case of hyperspectral, it is a hypercube. You can see the topography of the image. And at particular point in your image, you can click it there and you can take the spectra. Why use hyperspectral imaging for question document examination? Hyperspectral imaging is more sensitive than the conventional imaging technology. You can better discriminate the ink, advanced processing of the spectral, and you can get the advanced processing of the spectral and the spatial information. Hyperspectral imaging provides more information about spatial and spectral information in one data set. You can resolve the spectrum for every pixel. Nowadays, you are using basically you can say digital cameras. With the digital cameras, you can say with the 10 megapixel, 5 megapixel cameras are there. So for each pixel, each point of data set, you can take the spectra and then resolve the set. And the speed, because nowadays in this camera, in normal camera, what you used to do, normal camera, like in photography, when you used to have some sort of filter, and it was a tedious task. Why didn't you able to do the spectral? You can say spectral photography or imaging spectral. You can say in a you can say spectral imaging with that spectral imaging, because it was not possible with that multispectral imaging on that, because you have to filter, you have to change the filter every time. But with the help of so many new filters are there, like linear variable filter, interferometric filter, or the tunable filter, you can instantly change the wavelength, means you change the filters, create the filters, and you take the image at different wavelength. So you have up to 60, 70, 100 images in a seconds or 60 seconds. So you can do the speed is there. You can do that. If I say how to do the hyperspectral examination, you have a special camera, which is a camera is there. It is a camera. Then there is a basically interferometer, or like a tunable filter, interferometer, linear variable filter. Its role is to change the wavelength. So you are throwing the light, any document from sides. This is your exhibit from sides. You have this exhibit. You are keeping your exhibit here, throwing the light, and then filter is there. So whatever your reflection is going back, filter is just isolating that particular light and recording on the camera. So it is so instantly that 70 images for the same object, same light, in the same light source, you can record and you can create the hyperspectral image. There's something like that. And with this hyperspectral imaging process, in this kind of equipment, you can do the hyperspectral imaging in a reflection mode, transmission mode, luminescence mode, oblique sidelight mode, or optical variable feature. And because you have a hyperspectral camera means instead of filters, you have an interferometer, you have a basically interferometer, a device in either interferometer and so like this is a hyperspectral camera there. Then on the top of the camera, instead of using filter, you have an interferometer, liquid tunable filter. So it is at the you can tune at 1 nanometer wavelength. You can tune at the interval of 1 nanometer. So 30 to 70 images in a minute you can tune, and you can record the spectra, and then you can stick of the spectra. You can add the spectra one by one. It will be a stick of spectra, and you can make a hypercube. So this is a hyperspectral, and this is a multispectral. Instead of
this filter tunable, instead of this tunable filter or whatever interferometer or linear filter, you have a filters on filter view. So you can do multispectral imaging. So up to multispectral, it was common around 20 years ago, but in last 5 or 8 years or 10 years, hyperspectral has come, and which has opened a doors for further image topography. And then if I say in a black and white mode, this is your image of that flower image, and every point you have, every point you take the spectra, and in data set you have, if you take 3 megapixel at every pixels, you can take the spectra. Means 3 megapixel means 30 lakhs spectra you can record at 30 lakhs points. So there's a, you can see any point of time, any point of your image, you can take the spectra. So this is an advancement. Now the what is it? I'll say some example, like this is a normal RGB camera imaging that we see something is there. It is hidden by applying some sort of, you can say, some sort of whitening agent. So you are not able to see in the normal. And when you have applied white light at high 600 nanometer fixed wavelength, you are able to see, okay, something has been that it is now you are able to see below this white fluid. You see something is written. Again, you are transmitted mode. This is basically a normal white light you are putting at 600. Then it is a transmission mode at 600 meter. Means from the bottom you are putting the light, you are able to see something. And then you are normalizing. There's some algorithm is there, normalizing. And then the partial, you can say, component analysis. You are able to find what is written over there. So you have the camera with you, you have the setup with you, and then you have the algorithm. So many algorithms there, like normalization. Then you have the like a partial component analysis, PC2. You are able to see what is actually written in this. Same way, this is a latent print sample DF on a copy paper, ballpoint pen ink is written, digital RGB imaging at normal white light. We are able to see that 600 nanometer right there. And then partial component analysis we are doing of that. In a hyperspectral partial component, we are able to see what is there. Again, these optical variable features are there in a hyperspectral imaging. We are able to see at so many wavelengths in hyperspectral imaging. Similarly, we have chosen a region of interest in the similar image, and then we are taking the spectra from that hypercube. We created the hypercube, means that the topography of that, and every point of topography we picked the region and took the spectra. This is basically, and we know that what is there. And this is the tools which our company proudly promoting. This is the FORDEX, for its means forensic, D for document, X for examination. This is the forensic document examination system, and this is for the forensic document examination. We have given this kind of equipment to so many forensic laboratories, science, central forensic science laboratories. These are including optical magnification, some microscopic part. 150x is the optical magnification, 15 megapixel is the basically digital magnifications, and you get the 3D pictures also. At every point of the image, you can take the spectra on a hyperspectral cube. It can be 70 images in one shot. It can take in a minute, and it can create the spectra cube. And at every part of spectra cube, you can see the image. Then you can do the spectrum analysis. Then different light sources are there. Top light sources are there. Side light sources are there. Different light sources are there. You can see so many security features into that. And you can use the document database available, as I discussed earlier, regular database or Keystone database, American company. And then you have the RFID modules are there for a feature. And then to use that, so many modules are there, that machine readable zones and some magnetic features, zones are there, RFID enabled features are there. And then you have the stage with the move of that. So these kind of security features nowadays are available. Invisible personal information, ICO coded, passport, biometric tag, and 122 barcode, letter, screen data, security features, different kind of micro printing, nano printing, yellow dot analysis, image comparison, conversion. Then multispectral illumination. It is also possible, which is possible in every kind of VSC, UV activity, OVD, anti-soak analysis, retroreflective features, phosphorescent analysis, watermarks, hidden images, integral images, stamp and embossing, hidden marks. Then document alterations are there,
and then you are comparing that. Codex enable detection of any chemical traces, alteration, counterfeitation, evidence in that hyperspectral and spectral analysis of multispectral examination, pictures on the paper, ink and stamp. Now we come on the spectroscopy, as we discussed the FTIR, how it is FTIR. So spectroscopy part. Because spectrophotometer, this is about from the VSC, that was a technique. Now we are coming on spectroscopy, ink analysis. So what is spectrophotometer or photometer? Photometer, spectrophotometer is a basically equipment which work with the four element. One is a source, like any source. When we are in the UV visible spectrophotometer, there could be a UV source. UV source could be a deuterium lamp, either the deuterium lamp or UV source as a deuterium lamp, or maybe a xenon lamp or hydrogen lamp. Then there is a part. This part is called as a monochromator. Monochromator is device because any lamp is giving a complete spectrum of light. UV lamp is giving a light with the intensity in a UV region. But it doesn't mean that it will give only UV light. It will give even below UV light also. It will give a basically visible light also. But monochromator will separate a particular wavelength, particular band of light from that complete, you can say complete spectrum of light. And then you are exposing your sample, and whatever decrement in light, if it is in a transmission mode, or whatever availability of light is in reflectors mode, you are studying with the help of detector. So this is any photometer. And when you are using a filter, it is called as a photometer to separate the light. But when you are using a monochromator, or you can say interferometer, it is called as spectrophotometer. Actually, photometer and spectrophotometer are the same thing. We need not to get confused. The thing is that what kind of monochromator you are using, what kind of element you are using to separate the light. If your element is simple, some filters or glass pieces, then it is called as a photometer. But when you are using a monochromator or advanced monochromators, it is used as spectrophotometer. And all spectrometers are basically having the three elements: light source, monochromator, and then they expose to the sample and detector. And when we say IR spectrophotometer, UV spectrophotometer, visible spectrophotometer, X-ray fluorescence spectrometer, they are basically the portion of light what they choose, what you choose, or what they choose to give particular property. Because if I have to see the response of a particular material if I have to see the response of a particular material in UV light, this will called as a UV spectrophotometer. If I have to see the response of a particular material in visible light, it will be a visible spectrophotometer. If I choose a response of a particular material toward the infrared light, it would be an infrared spectrophotometer. If I choose a basically response of a material against the X-ray light, we have to use, it will be called as an X-ray spectrophotometer. Means essentially all spectrophotometers or photometers are same. It depends upon the light source what I am choosing, and the light source, it could be external, it could be inside. And then response, I can see the response in any mode. Either it is because normally we see in a spectrophotometer, it is in a transmission mode, it can be a reflectance mode also, or it can be a fluorescence mode also. So it is electromagnetic spectrum. It is there from gamma radiation to radio radiation. So normally in document analysis, we are confined to these three areas. One is ultraviolet, visible, infrared, and X-ray. Ultraviolet and visible comes in a one equipment. Infrared, for we have FTIR or IR, X-ray come different equipment. So three different equipments for these reasons, and these are the reasons we are using for examining any document, ink or paper. Like now we have the same in that. These are we have divided in the case of wavelength. This is the wavelength. We have the bigger wavelength, smaller the wavelength. We are going down. So our area of interest will be in this region only. Okay, so these are the basically properties
normally we see the property in UV region. We are seeing the when UV and visible region, we are seeing the property bonding like sigma bonding of electrons in a molecule, bonding of electron, how they absorb the energy and what information we are getting in a UV and visible region. But when we go in a infrared region, we are seeing the rotational property of that, like the molecular arrangement, like rotational property, like bending, twisting, stretching, all kind of, you can say, rotational property and vibrational property. In Raman also the same property, but in Raman normally we apply UV light, we apply visible light, we apply infrared light. And in ESR we are not using in document analysis. Nowadays you might have seen FTIR in laboratory, FTIR. So they were good for the chemical analysis or destructive analysis. But in last 10 years, it has become prevalent to use the IS spectroscopy with the portable or handheld equipment in a reflectance mode. So these kind of spectrophotometers are available, and these are immense useful, very useful in the document analysis. Very useful in document analysis. This is the basically FTIR, handheld FTIR. It can be used in a laboratory, it can be field, it can be your table. So so you can use this there. This is called as a platform to use, called as a docking station. So whatever the spectra you have to take, you have to put it put the sample on this, or you have to place this sample in downward, and you take the spectra on that. And this is a basically take the spectra, and this is coming in two parts. This is a basically electronics part and the screen, and this is a basically part to take the spectra. From this point you can take the spectra, and this point you can do the manipulation, see the spectra. And this is with the fiber optic cable with the 10 meter or 12 meter. So any part you can insert and take the spectra, and this is for the lab on the table only or the field only. So these are basically field and lab. This is a field and lab both, and this is only field. So what happened in FTIR? Because we see there, what is the difference in I? Because you might have heard IR spectrometer. Now, why it is FTIR? Because there is a difference between IR and FTIR. In FTIR, this part of monochromator, we have changed. We have changed this part. We have replaced this part of monochromator with the help with the interferometer. So interferometer is another advanced tool, which is such an advanced sort of you can say monochromator, which can change hundreds of wavelengths in a minute. So with the help of this interferometer, in this case, you have a light source like a photometer, and you have a beam splitter over here. So you are just putting the light to this beam splitter. 50% light gets straight away reflected, 50% light get transmitted from the beam splitter. And this mirror is a movable mirror. This is moving a very with the stepper motor. It is bound with some stepper motor, and it is moving in a basically it is moving very fast. Back and forth, back and forth, back and forth. So it is creating a sort of interference. So this light goes to some mirror which is reflecting the light again, and this mirror is there. Mirror is moving back and forth, that is also reflecting. And light comes together, and again it comes to the beam splitter, and beam splitter is again allowing 50% light to pass through and 50% to reflect. So when light comes, the light comes and they join together. So there is an interference. Then it is, if they have a constructive interference, or either a destructive interference. When they are a constructive interference, there is a gap of, you can say, 1 lambda. So you are creating the interference, and with the help of this light you are exposing to the detector. So this is basically FTIR. So instead of monochromator, you are having interferometer with the 1 lambda increment. So what is the advantage of this? Device is called FTIR meter and FTIR spectrometer. And what is the advantage? Advantage is the speed and resolution. So normally, so FTIR is giving you because when you have anything, you have to carry into the field. You have to carry for the on-spot analysis. You don't have any scope for doing the manipulation with the sample, treatment with the sample, and for the friction of seconds, milliseconds, you have to expose the sample. For that purpose, you have FTIR, field FTIR, or you can say at hand. You can say
hand FTIR. So you can take, so advantage is there. You can have the sensitivity. These FTIR are very sensitive. And sensitivity, but normally how to see the sensitivity? Sensitivity is up to 10,000 is to 50,000 is to 1 the signal to noise ratio. Then the resolution, you can resolve the image 0.01 centimeter inverse. This is the basically resolution 0.01 centimeter or 0.001 centimeter inverse resolution. And then the throughput advantage, you can take the multiple spectra in a seconds. Then FTIR, this is a basically FTIR, and this is the way you can take the spectra from this point. You can see this, and these are basically spectra of 4 dyes. Basically, these are the dyes. Tyrene dyes is there. We are just seeing some old picture is there, and we want to and the chemist has taken the spectra on some picture, some painting. This is a tyrene dye. This is basically caramine dyes. These are basically alizarin dyes. Alizarin, and you can also find out that alizarin is a basically synthetic origin, or is basically from the plant root. So this is the plant root alizarin dyes, and this is the indigo dyes. So you can see the spectra on any color picture. You can, with the help of that equipment, you can take the spectra of particular point, and you can see that. Again, this is some painting. It is some dust particles are there. It is observing this. Are basically dust particles are there. Silica particles are there. So any pictures you are seeing, and you observe the pictures and the photograph, and you can see that what is there and what is that. This is the photograph. This is the base, the basic color, and this is the image of the silica picture. Okay, the first is without cleaning it. Second is after cleaning it. So this will give the picture. And the similar way, this is the interior surface, exterior surface, and this interior surface and surface after the cleaning it. So you can take the spectra of every point on every picture. Then Fourier transform spectra, it is there. Again, this is spectra, FTIR spectra in a forensic lab. So you can the laboratory spectra. Then, as I discussed, why it is taking, how it is taking the picture, because you have to. So you have to have an ATR accessory or diffuse reflectance accessory. For any liquid, normally you use the ATR accessory. So this is a 1 bounce ATR tools are there. 1 bounce ATR accessory is there. At one point, you take the spectra. This is a 3 bounce, wherein you are taking it at 3 points. You are taking the spectra, and then you are averaging the spectra in a 3 bounce. And then these are 9 bounce. At 9 point, it takes the spectra and give you the average. These are basically ATR tool, single bounce, 3 bounce, and single bounce ATR reflection, 3 bounce ATR reflection, 9 bounce ATR reflection. Then the infrared spectroscopy. These are again some case studies there. So they have just studied the forensic investigation. Then another point is DSC. The DSC are the equipment. This show the heat response of a material. So when every material has a tendency, every ink, every paper, every pulp has a tendency to either to respond against the heat. Either it will evolve the heat or it will absorb the heat. So what you are doing, you have some sort of 2 identical pen in some equipments, and some sensors are there, temperature sensors are there. In one side, you keep a certified known reference material, maybe some inorganic salt or some metal salt. Those have they're the tendency toward a particular heat. Another, you are keeping your polymer sample or your ink sample, and then you are flowing the ink to that. So there's either this can be flowing into that, and then you give either energy, or you heat them, or note the energy or give them energy through the basically in the form of current, and see the heat parameter with reference to the sample, and this will give you the like gas transition and phase transition, and so melting points, like in polymer, gas transition, phase transition, melting points. So these are the phenomena in the ink and polymer. You can find out that the basically authenticity of particular ink, authenticity of particular polymer, authenticity of particular or if there is some paper are there, how they behave against the paper. Okay, so this is a differential scanning colorimeter. This is being used in several laboratory application. Notes are there on the, you can say on the in the public domain with a DSC in the ink analysis. You can refer that. Then this is the X-ray process. So before that, I will just simply go on the how X-ray process works.
So I think that this slide is missing. X-ray, basically in any X-ray spectrophotometer, you have a, instead of X-ray source is there or X-ray generator is there. So you have a X-ray generator. So X-ray generator will generate the X-ray of particular X-rays which you will throw on the you can say your exhibit, and in turn it will produce the different either fluorescence X-ray or different X-rays are there, and they are then they are recorded with the detector, and you do the X-ray. So X-ray analysis, energy dispersive X-rays or wavelength dispersive X-rays, depending upon X-rays are there, energy dispersive X-rays can do that. And the X-rays are basically for the trace metal analysis on any surface, on any material. And the energy dispersive X-rays, that does not matter whether the sample is solid, powder, liquid. You can do this is a non-destructive technique for the analysis. It can do the 1 to 10 minutes do the any analysis, any trace metal on any ink or any ink. It can do the trace metal analysis, extensive elemental measurement, sodium to uranium. It can do extensive quantitative concentration, ppm 2%. It will find out. And standard sample enabling simple quantitative analysis. It can do the qualitative as well as quantitative analysis. Can perform precise quantitative analysis using a standard sample capable of quantitative elemental analysis. This is a compact instrument, and nowadays handy tabletop, and nowadays even portable X-rays are there. So you need to bring the bring to the laboratory or change it. You can straight away you can put on the exhibit and you can do the X-ray analysis. So X-ray basically this is a theory about X-ray fluorescence. X-ray fluorescence is an analytical technique that uses the interaction of X-rays with the material to determine the elemental composition. XRF is a suitable technique for solid, liquid, and powder, and most circumstances it is a non-destructive technique. The analysis of major and trace elements in any material by X-ray fluorescence is made possible by behavior of atom when they impact on the radiation. When material are excited with high energy short wavelength radiation, they become ionized. If the energy of radiation is sufficient to dislodge the tightly held electron, the element become unstable and other electron replaces the missing inner electron. If this happens, energy released due to the decreased binding energy of the inner electron orbital compared with the outer. So this is basically this is there, and when you are instead of X-ray, when you use the laser, it is called as the laser induced breakdown spectroscopy. So there are basically so many applications are there in the public domain. This is a micro X-ray, similar X-ray, micro your small quantity and a smaller beam of the X-ray you are producing. Micro X-rays are there. Then there is a new technique, as I discussed. This is a Kelvin probe. Kelvin probe is a technique. It is a very popular technique in the physics, but it has been applied in the fingerprint and document examination in last few years. In fingerprint also, because it was earlier it was difficult to take the images those were available on a metal, like some hidden images, because or like fingerprint, if you are touching with any metal with the fingerprint, if you are not able to get the fingerprint, it is difficult. Even if somebody has even wiped out, it is difficult when some metal surface is wiped out, or if metal surface is wiped out. If I have with the fingerprint, still it is possible with this technique. Even if you have just washed with you can say washed with detergent or tightly wiped out any metal surface, still you can generate the fingerprint with the help of this technique, which is called as a Kelvin probe, which is having one Kelvin probe is there, then which is applying the current, and then you have a basically. So what is between metal plate and that probe, you give you generate the basically potential difference, and that potential difference will give you with the microscopic camera and oscilloscope will give you the spectra and 3D images, and you can see that. And this has successfully been applied in a fiction document. There are certain application is there where somebody wrote something on a metal plate, and then he thought that, and he destroyed the paper, and he thought that nobody would be able to get the you can say impression on that, because it is in a ball pen you have written on the metal plate, and it is very difficult. But applying this technique, some impressions were there, though those impressions were there, and the slightest impression, applying this technique, it was possible to see that. Like this is a pen drawing on an aluminum plate. Somebody wrote
with the color scale 0 to 0 millivolt to 900 volt current was applied, surplus potential applied, and we could able to see. And further, we color scale improved in a topographic manner. We see the simultaneous acquired surface. 8 micrometer, we use the beam height, we use the 8 micrometer of the basically the probe dia we used, and there's a signal amplitude slope, and we are able to see this was written on a metal plate, and it was metal plate was treated like anything, and nobody even thought that somebody can get the impression. So it is there. So these are coming. Then gas chromatography, mass spectrometry. Again, the gas chromatography, mass spectrometry. Gas chromatography is for the separation purpose. Mass is for the detection purpose. This is a simple paper chromatography technique we have discussed. Everybody has used. Even your student has used. All students might have used in their 11th study, 12th study. You are putting a filter paper into that. Either you can a paper chromatography, or you can put a basically thin layer, and then upward flow is going of the liquid, and then you have some spots are there. They are separated on the basis of their retention time and retention height, and then you by spraying you develop the color and you read the color, or sometime if you have a HPTLC you can just quantify the color. Then as we discussed in spectroscopy, when we come into the spectroscopy, Raman spectroscopy is there. When you expose the sample either UV light, visible light, or IR light, most likely, but most of the time in a commercial spectrophotometer, we are using instead of monochromator, we are using a laser source, basically UV laser source, visible laser source, or IR laser source. So normally when we are going to the inorganic analysis, or when we are going to the basically the like photovoltaic material or battery material or inorganic kind, we are using a laser source, visible laser source, 530 nanometer laser source is there. We are putting this laser source toward on our sample, and then scattering phenomena will we see when we put the light, and if light comes, the same light comes with the same light comes with the, you can say, higher wavelength or smaller wavelength. Higher wavelength is a Stoke or anti-Stoke light are there, we can see that. But for organic analysis, ink analysis, dye analysis, we are using 1064 nanometer laser. And the most common laser is 565. 565 is better because in visible it produces the fluorescence. In highest level 164, it can burn your sample or paper or whatever is there, sample or paper. So 765 nanometer wavelength we used, laser we used, and we can do the scattering property of the ink, and we can decide toward the non-disturbed technique for forensic analysis, Raman spectroscopy, chemospectroscopy. Then that forensic science, UV visible analysis with that and thin layer chromatography we have discussed. Then the trace metal analysis. Then this is the basically destructive technique we are applying for a PPB to PPT, PPM to PPT level of technique. You can do the trace metal analysis. Atomic absorption spectrophotometer are there, papers are there. Then there's the X-ray, then HPTLC we have discussed. If someone wants to discuss about HPTLC. Hello? Yes, sir. Are you getting my voice? Yes, sir, you are audible. Yeah. So HPTLC, sir, should I continue more or it is over? Because I have touched every technique. Okay, then there is another technique is rheology. Rheology is a basically flowing property of any polymer belt, plastic, or ink, basically. In what happened, it is a basically extension of viscosity property of liquid. Viscous, any viscous, and when we see the viscoelastic property, we use an equipment called a rheometer. Rheometer is basically one motor is there, and whatever ink is there or solution is there. So with the help of you can say this shaft, this is called as a bob. You are just rotating it, and you give the shear and see the property of that molecular property of that, and that will give you the idea. And this is a rheology is a basically ink characterization. This is a rheometer. Sir, I have covered everything, or should I enlarge, or is it okay? Hello? Hi, Doctor. Yes, sir. So is it okay? ठीक है डॉक्टर साहब. मेरा कहना है कि और ज्यादा करूं इसमें टेक्निक में, इतना काफी है.
Palak, you have to give me your opinion. So if you want to continue, then you can. 5 minutes, I- Dr. Saab. if some because I have to, in that case I have to elaborate the technique, because I have touched every technique. If Okay. somebody asks that what technique is there, I can explain that technique, that technique, how it is there. But then there are the research papers only. Research Okay. papers are in public domain, and that can be, I can explain the research paper only, if you Palak, wish. then we can have question answers. Sir, okay. Thank you, Prashant, sir. Students, the questions and answer session are now open for you. If you have any query, then you can drop the message in chat box. Check. Sir, right now there is no question, but sir, I wanted to ask a question. Sir, is there any freely available software for FTIR analysis? Are there. Software means one is a operating software. Okay. Operating means to operate the FTIR. Every FTIR manufacturer have their own software, but they are to take the spectra, record the spectra, and do the basically you can say spectra processing. And Yeah, the sir, for libraries are analysis there. purpose. Analysis means some software, the spectra, No, sir, for which is data analysis. I'm asking data about it. analysis. Data, basically there are libraries are there. So libraries are there for paints library, pigment library. Okay, like you say, like agencies are there, like as I said, the Sigma libraries are there, Idris libraries are there, and so many third-party libraries are there for different component. Even drug libraries are there, narcotic libraries are there, psychotropic substance libraries are there. There's pigments libraries are there, dyes libraries are there. So they can generate the spectra with the help of FTIR, and then they can match it with the library available to them. For that purpose, they have to specify that they want the library in absorption mode, they want the library in a ATR mode, that is the ATR library, or the diffuse reflectance library, or transmission mode. So one has to specify, and Okay. whatever library is specifying, the similar conditions they have to put on that, on the equipment, like what wavelength given in the library, because when I have to take the FTIR library, that 2 centimeter in 2 centimeter inverse resolution is there, or 1 centimeter inverse resolution is there, or 0.5 centimeter inverse resolution is there. So resolution has to be selected, wavelength region has to be selected. Then you take the spectra, and because library will be having their spectra in certain conditions. The similar condition you have to put on your equipment, record the spectra, and match with that, and it will give you the conclusion. Okay, sir. So dear students, any question? Because this is such a wonderful topic where you may have a lot of doubts. You can clear any of your doubts with Prashant sir. No questions? No, sir, right there is no question and answer. Okay, anytime, if they have my email ID is prashant.dutt@shivaglobaltechnologies.com. They can write me, and if somebody wants in a more detailed discussion Sir, or particular equipment, I'll be happy to do that. Sir, there is one question. Somebody is asking, can you explain rheology again? Yeah, rheology is a property of basically it is a basically advancement of basically it is a further rheology is to see the viscoelastic property. Viscous property, when the flowing property of any material is viscosity. When we flow some liquid, what happen? The surface, there will be interaction between surface and the liquid, so there will be a resistance of the liquid to flow. Okay, that is a viscosity. And when any material which is a viscous as well as elastic, to see the viscoelasticity property, it is the science to study the viscoelastic property of a material is rheology. Okay. I'm just going on the slide.
Rheology is the science of study the deformation and flow of the material. Flow is the basically viscous property. Deformation is the basically elastic property. Like any plastic, if I have a plastic wire, I just bend it and leave it. After some time, I will see that wire has become straightened, but there is a certain slightest, although it has recovered, but there is a slightest it has bent. So what happened? The portion which is still bent is called as a creep. And what and I suppose I took a wire, plastic wire or plastic, you can say plastic wire, and I fold it to 90 degree. So the 90 degree was the basically from 90 degree it has come to the straight. And there is only 1.01 degree is a basically creep and rest is the recovery. Okay, sir. Hello? Okay, got it. So that is a creep and recovery basically. So rheology is to study the deformation as well as flow. So any material, like any plastic material, it is behaving like a solid. But when you are giving a temperature, it behaves like a liquid. So we have to see the viscosity, which is a basic viscosity, which is a basically shear. So viscosity we are studying by the shear property. We are just like we are shearing something, and elasticity we are stretching something or stretching something, or you can say compressions or something. So to see, so any liquid is elastic at some point, any solid is behave like a viscous at some point. Any metal, any material, it is a elastic, it is a viscous. Nothing in the world is absolutely you can say elastic or absolutely viscous. It is a basically state. Like even iron is also elastic at some point of time, but we don't have such a force that we can do that. And the same way, so something like that viscoelastic feature is there. The same is the liquid. So rheology is the equipment is mainly is used in the ink characteristic, like ink and paint. How much when we are spreading the ink, how much it has to be spread on the ink. And like if I have some ink and I just throw the wall, so some of the ink will just stick to the wall, and some droplet will come down from the wall. So that droplet is called as a phenomenon called as a sagging of the ink. Means some droplet or some जिसको बोलते हैं लकीर छोटी-छोटी बन जाती है, that is a sagging. So that is an ink characteristic. So तो पॉलीमर में जो जितना भी होता है, जो हमारे पॉलीमर्स हैं, पॉलीमर्स का एक क्राइटेरिया होता है, उनका रियोलॉजी हम चेक करते हैं, इंक की हम रियोलॉजी चेक करते हैं, प्रॉपर्टी क्या है, उनकी कोटिंग प्रॉपर्टी क्या है, कितनी कोट बनेगी, कैसे अगर हम, क्योंकि कोई भी इंक पे बेसिकली वी यूज इन इंक, वी यूज अ सॉल्वेंट, वी हैव अ डाई एंड सम वी हैव अ एडहेसिंग मटेरियल, वी हैव अ बेसिकली ग्लूइंग मटेरियल व्हिच इज जस्ट स्टिकिंग ऑन दैट. तो उसमें बेसिकली उनकी स्टडी क्या है, उनका बेसिकली मिक्सचर क्या है, उनकी जो ग्लू है तो ग्लू का प्रॉपर्टी क्या है, ग्लू की प्रॉपर्टी हम लोग क्या करेंगे, रियोलॉजी में जाके करेंगे. वी विल जस्ट हीट दैट, गिव्स अप्लाई सम शियर एंड सी द प्रॉपर्टी ऑफ दैट. द सेम वे इन इंक, उसका कोटिंग प्रॉपर्टी क्या है, उनका लेवलिंग प्रॉपर्टी क्या है, एक के बाद दूसरी इंक हमने चढ़ाई है तो उसका उनकी लेयर्स क्या है, उनकी लेवलिंग क्या है. सो दीज आर द बेसिकली प्रॉपर्टीज फॉर द इंक एनालिसिस एंड द पॉलीमर एनालिसिस. सो रियोलॉजी टू स्टडी द फ्लो कैरेक्टरिस्टिक एज वेल एज elasticity, deformity characteristics. Any more questions? हाँ जी. Any more questions, dear students, researchers? No more questions? Over to Palak. Okay, fine, sir. Thank you, Prashant sir, for accepting our invitation and for being here with us today. Your thoughts have truly inspired us. The sessions were really very insightful and interesting. Thank you once again, sir. Thank you very much. On behalf of Honorable Vice Chancellor, Amity University, on my own behalf, and on behalf of Amity Institute of Forensic Science, I extend a very, very, heartfelt and profound thanks to Dr. Prashant Dutt sir for such an excellent talk. I mean, he has covered wide range of issues where forensic science practice is being confronted in day by day, forensic analytical findings. So, friends, today I think this is a platform through which our forensic dear students are empowered very nicely to understand that whatever observations, what we do in the laboratory,
and whatever findings we do through our analytical techniques gives us, lot of value in the eyes of judiciary when we present our results in a court of law for a thorough conviction using forensic analytical techniques. So Prashant sir has really, we are really grateful to Prashant sir for such a wonderful talk. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you for giving this opportunity. Thanks a lot to everybody for the patience they gave to hear this talk. Thank you very much and good day to everyone. Ravi sir, can we start with our next speaker? Yeah, please. Keshwani sir, join कर लिए. Keshwani sir, are you there? IT team, can you make Dr. Love Kesharwani as a co-host? Yes, ma'am. Done, ma'am. Hello. Love sir, are you Hello. able to hear me? Hello. 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 Love sir, yes, you are audible, Love sir. हाँ बिल्कुल सर, ये कैमरा भी स्टार्ट करें सर उधर से. हाँ, थैंक यू. हाँ sir, yes sir, you are audible. Okay sir, shall I start sir? Yes, Palak, please. Very good evening sir. Dr. Love Kesharwani is currently working as assistant professor in Department of Forensic Science, Schwartz, Allahabad, Uttar Pradesh. Dr. Love Kesharwani have vast experience in the field of forensic science and published more than 60 papers in various national and international journals, organized 20 seminars, conferences, and workshops, and guided 6 PhD students and 100 MSc students. A prominent content writer of EPG Pathshala program of MHRD, UGC India, guest faculty of various institutions. Dr. Kesharwani is continuously involved in teaching, research, and providing training to various police and private agencies in various fields of forensic sciences. Over to you, sir. You can share your PPT. Welcome, Love sir. Very warm welcome, sir. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच. ये सर आपका मोटिवेशन है और आपका जो है रिगार्ड है और आपका सर क्या कहते हैं गुड विशेस है कि मैं यहाँ पे हूँ, उसके लिए थैंक यू सो मच सर. आपका कंटिन्यूअसली सपोर्ट रहा है, एमईटी से भी पहले भी बहुत सारा आपका कंटिन्यूअसली सपोर्ट रहा, और जो हमारा आज डिपार्टमेंट स्टैंड कर रहा है सर, वो जस्ट बिकॉज ऑफ यू सर. थैंक यू सो मच. थैंक यू. माय प्लेजर. तो मैं डॉक्टर लव केशरवानी, आज का रिसोर्स पर्सन, और क्या कहते हैं, सबसे पहले मैं डॉक्टर केवी रवि कुमार सर का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे मौका दिया आपके साथ रूबरू होने का और अपने विचारों को रखने का. स्पेशली मैं डॉक्टर ज्योति का बहुत शुक्रगुजार हूँ और बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने कल से ही मुझे असिस्ट किया. बहुत सारी परेशानियां थी, मैं इससे पहले भी लेक्चर ज्वाइन करना चाह रहा था, वो हो नहीं पा रहा था मेरे एंड से, मेरे डिपार्टमेंट की एंड से, और जो क्या कहते हैं कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, अनफॉर्चुनेटली मेरा फोन भी हैंग हो गया, मेरा ऑफिस का कंप्यूटर भी हैंग हो गया. अभी मैं अपने बेटे के लैपटॉप से कर रहा हूँ. तो डॉक्टर ज्योति ने कल से ही मुझे असिस्ट किया और लगातार ही असिस्ट करती रही, कैसे लॉग इन करना है, क्या करना है. और नाउ मैं इस पोजीशन में हूँ कि आपसे इंटरेक्ट कर सकूं. दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ डॉक्टर ज्योति. सो थैंक यू वेरी मच ज्योति, आपका बहुत अच्छा प्रयास रहा. We must say thanks to you, Dr. Love Kesharwani. We are privileged that you are with us today. तो मैं उसको मैं आपके समक्ष आ सका. हम अभी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं. ये जॉब से रिलेटेड है और जो फोरेंसिक की जो अपॉर्चुनिटीज है या जो एंटरप्रेन्योरशिप है, इससे रिलेटेड है. बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज रहती हैं जब वो एंटर करते हैं, चाहे यूजी में चाहे पीजी में,
चाहे पीएचडी में, तो उनका ये मैक्सिमम टाइम यही सवाल रहता है कि मैं इस कोर्स में आ रहा हूँ, फोरेंसिक साइंस की फील्ड में आ रहा हूँ, तो व्हाट आर द जॉब अपॉर्चुनिटीज। एक कॉमन क्वेश्चन भी होता है, स्टूडेंट चाहे जिस फील्ड में जाए तो एक थोड़ा सा दिमाग में उसके रहता है कि यार मैं इस फील्ड में जा रहा हूँ, तो व्हाट अबाउट आफ्टर डूइंग दिस कोर्स, है ना, चाहे वो यूजी हो, पीजी हो या पीएचडी हो। तो एक बड़ा कॉमन सा है, और ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग भी लगता है, क्योंकि मैं डिपार्टमेंट की तरफ से एज अ प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर भी वर्क करता हूँ, और पर्सनल इंटरेस्ट लेके मैं स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट करता हूँ, उनकी प्रॉब्लम्स को देख के, और उनके जॉब से रिलेटेड काफी काम करता हूँ। उसका ये रिजल्ट है कि पिछले 12-15 सालों से हमारे डिपार्टमेंट काफी अच्छा प्लेसमेंट दिया, और ये सब श्रेय जो है हमारे डिपार्टमेंट के हेड, मैं और डॉक्टर मनीष कुमार मिश्रा हैं, उनका बहुत श्रेय है, क्योंकि हम लोगों ने कंटिन्यूअसली इस फील्ड में काम किया, कोशिश करी कि चाहे जो फील्ड हो, चाहे वो साइंस की हो, बायोटेक की हो, बायोकेमिस्ट्री को, जिस भी फील्ड हो, उसमें अगर हमारा फोरेंसिक का स्टूडेंट जा सकता है, उसकी कोई भी अपॉर्चुनिटी बनती है, तो हमने कोशिश करी। और उन्हीं सब चीजों को आज मैं ये प्रेजेंटेशन के थ्रू आपके समक्ष रखूंगा, ताकि आपको भी थोड़ा सा इंसाइट मिल सके, थोड़ा सा नॉलेज मिल सके, चाहे वो आप हमारी यूनिवर्सिटीज हो, चाहे मेटिस, चाहे जिस यूनिवर्सिटी हो, स्टूडेंट इज ऑलवेज अ स्टूडेंट, एंड उसको ये रिक्वायर्ड रहता है कि हमें जॉब की प्रोस्पेक्ट्स क्या है वो मिल सके, उनको पता चल सके। तो हम अभी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं इसको। ये मैं प्रेजेंटेशन शेयर कर रहा हूँ, दिख रहा होगा प्रेजेंटेशन है ये, विजिबल है ना प्रेजेंटेशन? नहीं अभी विजिबल, यस नाउ इट इज विजिबल। Yes, sir. ओके, तो ये जो टॉपिक था, दैट इज अ कैरियर एंड रिसर्च अपॉर्चुनिटीज इन फोरेंसिक एंड फोरेंसिक एंटरप्रेन्योरशिप। जब भी हम कोई स्टडी करते हैं, या हम कोई पढ़ाई करते हैं, या हम डिग्री लेते हैं, तो हमारा एक प्रॉपर गोल होता है कि आगे जाके हम लाइवहुड जो है, हमारा जो लाइवहुड है, वो जो हम अर्निंग है, वो बेटर तरीके से कर सके। बेटर तरीके से इन द सेंस कि आप गुड हैंडसम सैलरी हो, गुड पोजीशंस हो, ठीक है, आप सोसाइटी के थ्रू या सोसाइटी के द्वारा रिनाउंड पर्सनालिटी जाने जाए, है ना। तो ये सब हमारे सारे कुछ गोल्स होते हैं, ताकि हम कैरियर को जब हम परस्यू करते हैं, या जब हम कोई डिग्रीज परस्यू करते हैं, तो हमारा ये ऑब्जेक्टिव होता है कि हम एक अच्छा कैरियर परस्यू कर सके, या एक अच्छे कैरियर को अचीव कर सके। तो ये कुछ जो हमारे पुराने जो साइंटिस्ट हैं, या जो इससे कैरियर से रिलेटेड जुड़े लोग हैं, उन्होंने कुछ डेफिनेशंस दी कैरियर की, वो आपके सामने। दैट इज नॉट वेरी मच इम्पोर्टेंट। कैरियर सिंपली हम इसको ये मान लेते हैं कि जो हमारा लाइवहुड जो अर्निंग है, वो मेरा बेटर तरीके से हो, बहुत रिनाउंड हम जाने जाए इस फील्ड के लिए, हमारी जो लाइफ है वो स्मूथ गोइंग हो, और हम इस सोसाइटी या इस कंट्री को कुछ दे सके। दैट इज अ कैरियर। तो बेसिकली जब हम कैरियर स्टार्ट करते हैं, या जब स्टडीज के बाद कैरियर स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे सामने जब हम किसी यूनिवर्सिटी में एंटर करते हैं, तो 2 या 3 कोर्सेज जनरली हम फॉलो करते हैं। या तो हम जो एडमिशंस लेते हैं वो यूजी लेवल पे लेते हैं, या पीजी लेवल पे कोर्सेज करते हैं, या फिर पीएचडी लेवल पे करते हैं। तो मैंने इस प्रेजेंटेशन इसको कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, पीजी लेवल, यूजी लेवल, पीजी लेवल एंड पीएचडी लेवल। मेरे ख्याल से जो ऑडियंस है सारे यूजी लेवल के होंगे, पीजी भी होंगे, और पीएचडीज भी होंगे, और फैकल्टीज भी होंगे। तो उनके लिए काफी ये मोटिवेशनल होगा, काफी इंफॉर्मेटिव होगा। तो हम जो शुरू करेंगे अभी यूजी लेवल से शुरू करेंगे। अब क्योंकि आपने फोरेंसिक साइंस में ग्रेजुएशन कर लिया है ना, बीएससी कर ली है ना, ऑनर्स कर लिया, बीएससी ऑनर्स कर लिया, या जैसे दूसरी यूनिवर्सिटीज में रन करता है कि बीएससी 3 सब्जेक्ट से कॉम्बिनेशन में कर लिया, 2 सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन में कर लिया, या बीएससी सिंपल जैसे ऑनर्स है आपके यहाँ कर लिया। तो जब हम इस तरह की जो डिग्रीज है परस्यू कर लेते हैं, ये डिग्री जब हम कंप्लीट करते रहते हैं, तो उसके बाद का क्या सिनेरियो है, उसकी बाद का जॉब का क्या
लाइकहुड है या क्या हमें कैसे किस तरह की जॉब्स मिलेगी, हम उसी बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे प्राइमरली क्योंकि हम फोरेंसिक साइंस के हैं, हमने फोरेंसिक साइंस में डिग्री ली है, यूजी की डिग्री ली है, बीएससी डिग्री ली है, डिप्लोमा किया हुआ है। बेसिकली जो हमारा जो मेन मोटो होता है कि हम लेबोरेटरीज, जिसको हम आप फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज भी कहते हैं, उसमें प्लेसमेंट लेने की कोशिश करें या उसमें जाएं, ठीक है ना। तो आपने भी पढ़ा होगा कि जो एफएसएल्स होती हैं, सीएफएसएल्स हैं, एफएसएल्स हैं, स्टेट एफएसएल्स हैं, ठीक है ना, रीजनल एफएसएल्स होती हैं, फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज होती हैं, मोबाइल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज होती हैं। तो इनमें जो बेसिकली आप एंटर करते हैं, जो एंटर करने की जो पोजीशंस होती है वो साइंटिफिक असिस्टेंट या सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट कुछ जगह पे लेते हैं, तो उसमें बीएससी, दे कॉल आउट फॉर बीएससी एग्जामिनेशंस होते हैं, है ना। जैसे आपका कर्नाटका करता है, जयपुर करता है, महाराष्ट्र एफएसएल करता है, पटना एफएसएल करता है, दिल्ली एफएसएल इंटरव्यूज पे करते हैं। तो या तो रिटन इंटरव्यू, रिटन एग्जाम है, देन इंटरव्यू है, और इंटरव्यू सीधा इंटरव्यू से आपको सिलेक्शन वो करते हैं, ठीक है ना। तो एफएसएल्स और सीएफएसएल्स में आप जो मेन आपका जो स्ट्रीम बनता है वो सीएफएसएल और एफएसएल्स है। इसके अलावा भी बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पे आप जॉब अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर कर सकते हैं या वहाँ पे जॉब कर सकते हैं। जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो है, ये बहुत कम जो वैसा एरिया है जो कम जो फोरेंसिक साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा सा कम उस पर फोकस करते हैं या थोड़ा सा जानकारी के अभाव में। ये इंटेलिजेंस ब्यूरो के एग्जामिनेशंस होते हैं। मैंने देखा होगा करीब करीब पिछले कोरोना पीरियड को आप छोड़ दें तो 2019 से 19 से पहले मैंने रेगुलरली हर साल इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 1 और 2 के जो पोजीशंस हैं वो देखे हुए। करीब 2000 आते हैं, 1500 हैं, 2500 हैं, ये इस तरह की पोजीशंस आती हैं। इसमें आपका एग्जामिनेशन होता है, एग्जामिनेशंस के बाद इंटरव्यूज होते हैं। मैं इसको इसलिए बहुत ज्यादा एम्फेसाइज कर रहा हूँ क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट के काफी बच्चों ने काफी बच्चे इसमें एंटर हुए, उनको एंट्री मिली, और कुछ बच्चे हमारे यहाँ आते भी हैं जॉब ज्वाइन करने के बाद बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। तो इसमें सिंपली जो है एग्जामिनेशंस होते हैं जो आपके नॉर्मल एसएससीज के एग्जामिनेशंस होते हैं, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, यही सब आता है, कुछ एक्स्ट्रा इसमें आता नहीं है। वंस यू हैव क्लियर्ड द रिटन एग्जामिनेशन, आप ये मान के चलिए कि आपकी जो प्रोबेबिलिटी है इंटरव्यू को क्रॉस करने की वो 99.9% हो जाती है, क्योंकि आप फोरेंसिक साइंस के फील्ड के हो और जो इंटेलिजेंस ब्यूरो में जो वर्क होता है या जो काम है वो करीब करीब इसी से रिलेटेड है, थोड़ा सा इंटेलिजेंस को छोड़ के। तो वहां पे जो भी इंटरव्यूअर्स हैं दे आर वेरी मच हैप्पी कि आप वहां पे एज अ एस्पायरेंट जाएं, आप उस तरह से जॉब लेने के लिए जाए तो बहुत हैप्पी फील करते हैं। और मोस्ट प्रॉब्ली मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने इंटरव्यूज दिए, दे गॉट सिलेक्शंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है जिसको आप ऑप्ट कर सकते हो। इसके लिए एडिशनल आपको कुछ करना नहीं है, सिंपली आप न्यूज़पेपर्स वगैरह पढ़ते हो, इंग्लिश आपको आती है, मैथमेटिक्स आपको आती है, और नॉर्मल जो जीके और जो रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं यही सब आते हैं, आपको अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं है। इसमें बीएससी फोरेंसिक साइंस या जो कॉम्बिनेशन ऑफ फोरेंसिक साइंसेस आपने करे हैं उसका बेनिफिट ये है कि आपको इंटरव्यूज में बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है, और करीब करीब मैं ये मान के चलता हूँ कि 99 to 95% सिलेक्शन हमारे बच्चों के होते हैं जस्ट बिकॉज कि उन्होंने फोरेंसिक साइंस से ग्रेजुएशंस कर रखे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखे हैं। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, और बहुत सारे बच्चों ने अपने को एड किया है इस डिपार्टमेंट में। अच्छी सैलरीज हैं, है ना, एवेन्यूज बहुत अच्छे हैं, प्रमोशंस बहुत अच्छे हैं, तो आप इसको ऑप्ट कर सकते हो। दूसरा आपका पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, यूपी पुलिस है, बाकी जितने भी स्टेट की पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल की पुलिस की ऑर्गेनाइजेशन है। लोअर लेवल पे भी जाएंगे, हायर लेवल पे भी जाएंगे। लोअर लेवल पे नॉर्मली रिटन एग्जामिनेशंस होते हैं, सिंपली वही इंग्लिश जी के मैथ्स आते हैं। हायर लेवल पे जाएंगे तो रिटन है प्लस इंटरव्यू है, इसमें भी वही बेनिफिट मिलता है आपको। आपने एमएससी फोरेंसिक साइंस कर रखी है, बीएससी फोरेंसिक साइंस कर रखी है, जो भीड़ है जिन्होंने
एग्जामिनेशन क्लियर करिए, उससे जस्ट आपको ये एक अलग कर देता है। और जब भी आप इंटरव्यूज के लिए जाओगे, आप मेरा यकीन मानिए आपको 100% श्योर सिलेक्शन है आपका, बिकॉज यू हैव अ डिग्रीज इन फोरेंसिक साइंस। वहां भी अपने उनके ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड चीजें पूछी जाती हैं, इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड पूछी जाती है, जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है। अब नेक्स्ट आपका जो आता है PSCs, जो पब्लिक सर्विस कमीशन है। अब मैं इसको इसलिए थोड़ा सा एम्फसाइज कर रहा हूँ कि जो मेरे फोरेंसिक साइंस के बच्चे हैं, चाहे वो मेरी यूनिवर्सिटी से हो चाहे अलग यूनिवर्सिटी से हो, थोड़ा सा इस फील्ड में थोड़ा सा कम ध्यान देते हैं। थोड़ा सा इसमें ध्यान देने की जरूरत है। आपकी जो फोरेंसिक साइंस की फील्ड है, जो लेबोरेटरीज में जाना है या प्राइवेट फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज में काम करना है या लॉ फॉर्म्स में काम करना है, वो तो आपका ही है। लेकिन इसमें भी अगर थोड़ा सा आप मेहनत करेंगे, थोड़ा सा अलग से ध्यान देंगे, तो इसमें बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटीज है। गोल्डन अपॉर्चुनिटीज इसलिए है कि आपने अगर वो निकाला रिटन एग्जामिनेशंस, तो आपको इंटरव्यू में बिल्कुल भी कोई भी रोकने वाला नहीं है। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं इस बात की आपको 100% गारंटी दे सकता हूँ, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स जाते हैं, मेरे स्टूडेंट्स ने किया हुआ है, मेरे स्टूडेंट्स को मिला है, नौकरियां मिली हुई है बहुत अच्छी अच्छी पोजीशन। तो जो PSCs पे जो पब्लिक सर्विस कमीशन से जो डिफरेंट स्टेट्स की हैं, 27 स्टेट्स हैं ना, 28 स्टेट्स, तो उनकी अपनी अपनी PSCs हैं। और हर साल अराउंड जो है, हर जो PSC निकालती है पोस्ट, वो 1500 से लेके 2000 के आसपास निकालती है। तो आप मल्टीप्लाई कर ले इनटू 28 या 29 स्टेट्स हैं, तो आप सोच ले जो स्ट्रेंथ है, जो वैकेंसीज की स्ट्रेंथ है, आप देख लीजिए कितनी वैकेंसीज की स्ट्रेंथ है और कितने ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है। ठीक है ना। तो जो PSC से जो जनरली अपॉइंटमेंट्स होते हैं, वो देख लीजिए आप दिया हुआ है, डिप्टी कलेक्टर्स की हैं, सुपरिटेंडेंट्स की हैं, असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर्स की हैं। एक्चुअली मैं इसलिए बहुत ज्यादा एम्फसाइज कर रहा हूँ इन सब सारी चीजों के लिए, क्योंकि जो फोरेंसिक साइंस की फील्ड है ना, दैट इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड, है ना। जहां भी जिस फील्ड में आप जाओगे, वहां फोरेंसिक साइंस का यूटिलाइजेशन है ही है। क्यों है? क्योंकि हर जगह आपको करप्शन से देखना है, आपको पेपर वर्क देखना है, आपको कुछ डिफरेंट तरीके के क्राइम सीन्स होते हैं, कुछ क्राइम्स होते हैं, तो हर तरह की चीजें आपको इन्वॉल्व होंगी। इसलिए मैं आपको एम्फसाइज कर रहा हूं। अब जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण लेता हूं, ये देखिए, जैसे ट्रेजरी ऑफिसर्स हैं, वो सब रजिस्ट्रार ऑफिस होता है ना, जहाँ पे विल्स बनती है। विल समझते हैं ना, जो वो है, क्या कहते हैं, जो जब आप रजिस्ट्री कराने जाते हो ना, जमीन खरीदते हैं, मकान खरीदते हैं, विल्स होती है। आप सोचिए रजिस्ट्री ऑफिस में आप सब रजिस्ट्रार हो गए, तो आपको कौन हरा सकता है भाई? आपको कौन डिफीट कर सकता है? या कोई फेक चीजें आपसे कैसे कर सकता है? कोई बेईमानी नहीं कर सकता है ना। अंगूठा लगाना है, सिग्नेचर्स कराने हैं, विल्स बननी है, कैसे विल्स बननी है, आपने डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन पढ़ रखा है, आपने फिंगरप्रिंट एग्जामिनेशन पढ़ रखा है, आपने सिग्नेचर एग्जामिनेशन पढ़ रखा है। कौन आपसे फ्रॉड कर सकता है? कौन सी दिक्कतें, कोई कौन आपको डिफीट कर सकता है? नहीं कर सकता है आप डिफीट। यही सब सारी चीजें इंटरव्यूज में पूछी जाती हैं। जिस फील्ड का पर्टिकुलर बंदा है, उस फील्ड से चीजें पूछी जाए। आप मुझे बताओ ना कि कौन आपको हरा सकता है? व्हेन यू नो डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन, व्हेन यू नो सिग्नेचर एग्जामिनेशन, व्हेन यू नो फिंगरप्रिंट एग्जामिनेशन, you know all about the registries, wills and all the things. आपको कौन हरा सकता है? अरे बिल्कुल कोई नहीं हरा सकता भाई। आप ट्रेजरी ऑफिस में जाइए, आप एज अ ट्रेजरर ऑफिसर बन जाइए, है ना। आप देखिए कितनी सारी चीजें, बेसिक एजुकेशन ऑफिसर्स हैं, कुछ के लिए थोड़ा सा अलग रिक्वायरमेंट्स हैं, बट जनरली सबके लिए ग्रेजुएशन ही मांगते हैं, जो मैंने अभी तक देखा हुआ है, जो डिफरेंट डिफरेंट PSCs है। तो आप सोचिए, मैं आपको आपकी एवेन्यूज एक्सप्लोर करने की बता रहा हूँ। आपकी हर जगह एवेन्यूज है। फोरेंसिक साइंस इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी साइंस, जहां जिस चीज की यूटिलाइजेशन हर फील्ड में, कोई भी आप ऐसा फील्ड बता दो जिसमें ना हो, क्योंकि क्राइम और फेक चीजें और इस तरह की चीजें आपको हर जगह फेस करनी पड़ेगी। व्हेन यू हैव अ नॉलेज ऑफ फोरेंसिक साइंस, यू कैन डील इट मोर बेटर देन द पर्सन हु इज फ्रॉम द जनरल साइंस बैकग्राउंड और फ्रॉम द आर्ट्स बैकग्राउंड। इसलिए मैं कह रहा हूं, यू हैव टू ऑफ दीज थिंग्स। आपका फोरेंसिक साइंस का, फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज का, सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज के ऑप्शंस तो हैं ही है बेटा। यू कैन डू इट फ्रॉम दीज आल्सो, यू कैन गो फॉर दीज अपॉर्चुनिटीज आल्सो। आपको किसी ने मना थोड़ी नहीं किया है। किसी टीचर ने मना किया आपको? बता दीजिए। नहीं मना किया ना, किसी ने भी मना किया हो, आपके टीचर्स ने, आपके पेरेंट्स ने, किसी ने मना नहीं किया। आप मूव कर सकते हैं, दीज आर द बेटर फील्ड्स, है ना। आपकी फोरेंसिक साइंस की अपनी फील्ड तो है ही है, इसमें भी आप चाहें तो प्रयास कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। इंटरव्यू निकालने का है,
इंटरव्यू निकाल लीजिए, मैं 100% गारंटी देता हूँ, सॉरी रिटर्न निकाल लीजिए, इंटरव्यू का 100% गारंटी देता हूँ, है ना। देखिए कितनी सारी फील्ड्स हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, असिस्टेंट डायरेक्टर, बहुत सारा, ये देखिए ना आप, मतलब इतनी जॉब्स भरी हुई हैं हर फील्ड की, और क्लास 2 लेवल की जॉब्स होती हैं, आप प्रमोट करके क्लास 1 में जाते हो, बहुत सारे पर्क्स हैं, बहुत सारी एडवांटेजेस हैं, कुछ बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना पड़ता उसके लिए, कुछ खास सब्जेक्ट्स, हिस्ट्री आपने पहले से पढ़ रखी है, न्यूज़पेपर ऑलरेडी करंट अफेयर्स के लिए पढ़ते हो, फिर पढ़ना क्या, कुछ भी एडिशनल एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना होता है, जो आपने पढ़ रखा है वही सब सारी चीजें एडिशनल। एक्सक्यूज मी, बात करता हूँ ना, थोड़ा लेक्चर, ठीक है। तो देखिए कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए, देखिए ना पूरा सब प्रोग्राम ऑफिसर है, लेबर ऑफिसर, हर जगह आपका जो है अपॉर्चुनिटीज ही है। अब ये देखिए ना उनकी परस, देखिए ना ये उनका जो सैलरी लेवल देखिए, या जो बाय द एक्सपीरियंस वो जो उनको जॉब, मतलब जो उनको प्रमोशंस मिलते हैं, आप देखो 16-15 लेवल तक जाता है ये, 10 लेवल से शुरू करके, जो हम लोग की असिस्टेंट प्रोफेसर की है 3rd ग्रेड की, फिर एसोसिएट की 13A की आती है, 13A 14A 15 तक जाता है, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, यू कैन मूव ना। ये देख लो कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज। अब ये पीएससीज की मैं बात करता हूँ, आप यूपीएससीज भी ले लीजिए, आप यूपीएससीज के लिए भी किसी ने मना की, जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की जो जॉब है उसके लिए भी आप जा सकते हैं। इवन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से तो आपकी CFSLs की भी जॉब आती है, सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज की, जिसमें आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो और डायरेक्ट इंटरव्यू के थ्रू असिस्टेंट डायरेक्टर, सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर और जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर, जितनी भी सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज की जॉब है वो आपको यूपीएससी के थ्रू ही मिलेंगी, ठीक है। वो ये है कि जो नॉर्मल जो यूपीएससी देते हैं, जो आईएएस का एग्जाम देते हैं, वो आपको रिटर्न देना पड़ेगा, प्री और मेंस देना पड़ता है, लेकिन जब आप फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज के लिए जॉब के लिए जाते हो तो सिर्फ आपको इंटरव्यू देना पड़ता है, तब जब आप शॉर्ट लिस्टेड हो, ठीक है ना। इन दैट केस व्हेन यू गॉट शॉर्ट लिस्टेड, ठीक है ना। तो फेस तो आपको वैसे भी यूपीएससी करना पड़ेगा, तो जब आप उसके लिए फेस कर रहे हो, जब आप फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज की जॉब के लिए फेस कर रहे हो, तो थोड़ा सा एफर्ट करके इसके लिए क्यों नहीं, कितनी सारी पोस्ट है, कितनी सारी पोजीशंस हैं, देखिए 2-2 हजार, 1-1 हजार, 1.5 हजार पोजीशंस आती है, बताइए सब ग्रुप ए लेवल की जॉब्स है, बहुत जबरदस्त। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही बोलता हूँ, मैं आपको भी यही बोलता हूँ, व्हाई नॉट, क्या कमी है आप में, क्या चीजें नहीं, आप सब जानते हो, आपने सब कुछ पढ़ रखा है, थोड़ा सा एफर्ट है, थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी रखने की जरूरत है, दैट्स ऑल। आप फोरेंसिक साइंस के लिए करते हो, आप फोरेंसिक साइंस के लिए तैयारी करते हो ना, आप डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन पढ़ रहे हो, फिंगरप्रिंट एग्जामिनेशन, फोरेंसिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन पढ़ रहे हो, फोरेंसिक फिजिक्स पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, अरे और आता क्या है भाई, यही सब कुछ आता है, कुछ अलग नहीं आता है ना, बात मानो मेरी आप, कुछ भी अलग नहीं आता है इसमें। जीके आप ऑलरेडी पढ़ते ही हो, न्यूज़पेपर्स पढ़ते हो, टीवी देखते हो, जनरल अवेयरनेस का पढ़ती हो, और क्या एडिशनल है क्या भाई, कुछ नहीं है एडिशनल। आप तैयारी करोगे आपका हो जाएगा, बिल्कुल आप बात ना रो मेरी, आप भरोसा रखो अपने पे, कॉन्फिडेंस रखो, है ना, जरूर कर सकते हो आप। और जब आप इस ग्रुप में, आप मैं बता रहा हूँ, आप अगर प्री और मेंस निकाल लेते हो तो इंटरव्यू आपको कोई रोक नहीं सकता, ये भी मेरी गारंटी है, डॉक्टर लवकी श्रवानी की गारंटी है आपको। बच्चे गए हैं, बच्चों ने एडमिशन लिए हैं, बच्चों को नौकरियां मिली हैं, बात मानिए मेरी। देखिए कितने सारी, इतनी सारी जॉब्स होती हैं, है ना। देखिए टैक्स डिपार्टमेंट में, हर जगह, यूनियन टेरिटरीज में है, ओवरसीज है, आर्म फोर्सेस में है, कॉर्पोरेट ट्रेड में है, टैक्स में है, कॉर्पोरेट में, बहुत सारी है ना। देखिए कितनी बड़े बड़े पोजीशंस हैं, डीएम्स बन सकते हैं आप, सेक्रेटरीज बन सकते हैं, डिविजनल कमिश्नर्स बन सकते हैं, क्या क्या नहीं हो सकता। और एलिजिबिलिटी क्या है भाई, एलिजिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ बीएससी है, ग्रेजुएशन, नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं मांगता ये आपसे, एडिशनल क्वालिफिकेशन कुछ भी नहीं मांगता है, मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, दैट्स ऑल, ठीक है ना। आपसे कुछ भी वो MSCs नहीं मांग रहा है, कुछ भी PhDs नहीं, कुछ भी नहीं मांग रहा है, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपने BSc करी है, जो ग्रेजुएशन किया है, जो UG करी है, जो BSc ऑनर्स किया है आपने, वही क्वालिफिकेशन है इसकी मिनिमम, आप मान लीजिए इस बात को, ठीक है ना। देखिए एडिशनल सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, बाप रे बाप, देखिए आप पुलिस में जाइए ना, ये देखिए कितनी, डिप्टी कमिश्नर है, कमिश्नर है, इंस्पेक्टर जनरल है, क्या क्या चीजें हैं, CBI में जाइए, कहाँ IB में जाइए,
मस्त पोजीशंस में जाइए ना, हायर पोजीशंस पे। जो फोरेंसिक साइंस पढ़ी है इसका डायरेक्ट यूटिलाइजेशन है इसमें, आप जाइए, कोशिश करिए। क्यों नहीं कोशिश करते भाई? आपका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो आपने zoology, बॉटनी, केमिस्ट्री, फोरेंसिक साइंस, फिजिक्स सब तो पढ़ रखा है, कुछ भी ऐसा नहीं जो ना पढ़ रखा हो। कोशिश करिए, जाइए, ठीक है ना। IFS में चले जाइए, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में चले जाइए, देखिए उसी से सब सारी चीजें होती हैं। ये देखिए IRS में जाइए, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में जाइए। मेरे फ्रेंड का खुद दो भाई, मेरे फ्रेंड्स के, मेरा जो कॉलेज इंटरमीडिएट का फ्रेंड है पवन पांडे, उसके दो भाई यहाँ रेवेन्यू सर्विसेज में है, असिस्टेंट कमिश्नर, एक ग्वालियर में है, एक वहां पे चंडीगढ़ में है। अरे जाइए भाई, क्या दिक्कत है? कुछ भी दिक्कत नहीं है। देखिए सैलरीज देखिए आप ना, देखिए कुछ भी नहीं है। जो फोरेंसिक साइंस आपने ग्रेजुएशन कर रखा है वही मिनिमम क्वालिफिकेशन है, आपको कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत एफर्ट करके आप जा सकते हो भाई, बिल्कुल करिए, किसी ने मना थोड़ी किया। ये देखिए क्या क्या पर्क्स देता है, बताइए, मेडिकल लीव्स है, ऑफिशियल रेजिडेंस है, सिक्योरिटी देता है, क्या क्या चीजें देता है, देखिए ना, खुद देखिए क्या क्या चीजें आपको इसने दे रहा है, पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स है। जब इतनी सारी पर्क्स है, वाई यू आर नॉट अप्लाइंग फॉर इट, ठीक है। और जब आपको यूपीएससी फेस करना ही है, सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर के लिए, जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर के लिए, असिस्टेंट डायरेक्टर लिए, तो इसके लिए क्यों नहीं भाई? आपको जाना है ना, फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में नौकरी पानी है तो फेस करना पड़ेगा, तो इसके लिए क्यों नहीं, इसको भी ना फेस करें आप? क्या दिक्कत है इसमें? करिए, किसी टीचर ने मना नहीं किया, सब बोलते हैं आप करिए भाई। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएशन है, करिए, कौन मना करता है आपको? देखिए, अब उसके बाद हम थोड़ा सा और दूसरे फील्ड्स में लेंगे, तो बैंकिंग में वही है। प्राइवेट बैंक, बहुत सारे बच्चे प्राइवेट बैंक्स में गए हैं। अब आप गवर्नमेंट बैंक में जाएंगे तो भाई आपको पीओ के लिए तैयारी करनी पड़ेगी, वो थोड़ा सा डिफरेंट फील्ड है, उसके लिए थोड़ा सा आपको अलग तैयारी करनी पड़ेगी। लेकिन उसमें भी यही है, उसमें आपको मेन देना पड़ेगा, प्री देना पड़ेगा, मेन और इंटरव्यू, फिर वही आता है। आप इंटरव्यू दोगे, इंटरव्यू में आपका 100% सिलेक्शन, अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो रिटन एग्जाम, ये बात मान के चलिए, ठीक है ना। तो ये बैंक न्यूज वगैरह का आपका जो है, आप उसको देख सकते हैं। SBI है, बहुत है, डिफरेंट पोजीशन निकलती है। RBI के असिस्टेंट पोजीशन लिखते हैं। मैं एकदम आश्चर्यचकित रह गया भाई, मैं तो इस जॉब में आ गया बाद में, जब मेरी एज 30-35 का हो गया, तब मुझे पता चला यार RBI असिस्टेंट की भी जॉब निकलती है। RBI में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मुंबई में, यस। और क्वालिफिकेशन क्या है भाई? ग्रेजुएशन, ठीक है। आप पोस्ट निकलते, एग्जामिनेशन होता है, इंटरव्यू होता है, ले लीजिए। बताओ कि RBI में जो काम होता है, जो तो कौन, अरे भाई, करेंसी नोट एग्जामिनेशन आप जानते हैं,
am I audible? Hello. Yes. Yes, sir. You are audible. लव जी की आवाज नहीं आ रही क्या वहाँ? Yes, sir. Yes, sir. IT team, please look into that, please. यस सर, लव सर का इंटरनेट चला गया था सर, अभी वो दोबारा रिजॉइन हुए हैं सर. Okay, Uh, thank you, thank you. Yes, Shruti, you have raised your hand. हेलो. हाँ हाँ, आ रही आवाज आ रही है. Yes, yes, sir. आपकी आ You are रही है? audible. यस सर. कंटिन्यू करते हैं, वो ब्रेक हो गया था. हाँ, इंटरनेट प्रॉब्लम थी. अभी हम कंटिन्यू करते हैं इसको. हेलो, आवाज आ रही मेरी? Yes, sir. You are Yes, audible. sir. ठीक है, ठीक है. तो हम लोग बात कर रहे थे बैंक पीओ की बात करते, तो बहुत सारे उसमें आरबीआई असिस्टेंट की निकलते हैं. वेरी मच अगेंस्ट कि इस तरह की पोजीशंस निकलती हैं और बहुत सारे बच्चे इसमें जाते हैं. तो आप भी क्यों नहीं कोशिश करते, आपको मिलेगा. प्लस अब एक और जो सेक्टर है, बहुत प्रॉमिसिंग सेक्टर, दैट इज द इंश्योरेंस सेक्टर है. तो बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज है जो इंश्योरेंस वेरिफिकेशन स्पेशलिस्ट हायर करती हैं, कोऑर्डिनेटर्स हायर करती हैं, क्लेम असिस्टेंट हायर करती हैं, एग्जामिनर, एनालिस्ट और फील्ड इंस्पेक्टर्स करती हैं. मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ बिल्कुल. ओके ओके. तो मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ. एक स्टूडेंट था मेरा फर्स्ट बैच का, जिसका नाम था रंजीत कुमार निगम. तो ही इज क्लास 1 ऑफिसर इन यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस, डैमेज असिस्टेंट असेसमेंट ऑफिसर है, ओवरसीज बैंक, ओवरसीज कंसाइनमेंट का मतलब जो फॉरेन से कंसाइनमेंट्स आती हैं उनकी डैमेज की या उनके लॉस की या उनके रिपेयर की चीजें देखता है. ही इज एमएससी फोरेंसिक साइंस फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ फोरेंसिक साइंस, श्वार्ट्स. ठीक है. तो जब वो बंदा नौकरी ले सकता है इंश्योरेंस सेक्टर्स में, इंश्योरेंस फील्ड में, तो आप क्यों नहीं ले सकते? ही इज जस्ट सिंपली एमएससी. वहां पे उसने पहले सीएफएसएल कलकत्ता में काम किया, कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन पे 1 साल. उसके बाद डायरेक्टली वो परमानेंट पोजीशन पे डैमेज असिस्टेंस ऑफिसर हो गया यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस में, अभी नंबर 1 पोजीशन पे. ठीक है ना? तो आप भी उस पे जा सकते हैं, आप भी उस पे कोशिश कर सकते हैं. बशर्ते ये है कि आपको प्रयास करने की जरूरत है. कुछ नॉलेज नहीं होता, कुछ हमको जानकारी नहीं होती इस फील्ड में, तो इसलिए हम शायद कोशिश नहीं कर सकते. पर ये सब भी सोचिए, ये सब भी फील्ड्स क्या है आपके लिए ओपन है ना? किसी ने मना नहीं किया है, आप कोशिश करेंगे. और आजकल तो बहुत बेहतर है. बेहतर इसलिए है क्योंकि इतनी सारी प्राइवेट फर्म्स आ गई हैं जो इस फील्ड में हैं, एंड दे नीड इट, है ना? बशर्ते आपको अपनी फील्ड का नॉलेज होना चाहिए और आपको अपने काम के बारे में पता होना चाहिए कि आपको क्या वर्क करना है, और आप उसमें एक्सपर्टाइज होने चाहिए. आपको एक मौका मिलेगा और उस मौके को ही आपको जॉब में बदलना है. हर बार आपको एक बार बुलाया जाएगा, इंटरव्यूज होगा, इंटरव्यू वगैरह होगा. अगर आप इंटरव्यूअर को सेटिस्फाई कर लेते हैं, आपको नॉलेज है, आप बता सकते हैं कि आप कर सकते हैं, तो आपको पक्का मिलेगा. ठीक है ना? देखिए, कुछ जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं बहुत सारी, ये तो गवर्नमेंट की हैं, जो इंडिया, न्यू इंडिया इंश्योरेंस, ओरिएंटल है, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस है. बाकी देखिए प्राइवेट कितनी सारी देख रहे हैं आप. मेरी आवाज जा रही है ना? हेलो. Yes, sir. You are audible. Yes, sir. प्लीज प्लीज, क्योंकि यहाँ इंटरनेट बड़ा स्टेबल है. तो But your PPT is not visible. अच्छा अच्छा, एक मिनट. You need to share it once again. ओहो, फिर से वो लॉन्च हो गया. हाँ, मैं करता हूँ फिर से. अब आ रहा होगा ना? सर आप अपनी वीडियो ऑफ कर लीजिए, आपका नेट ना थोड़ा स्लो चल रहा है सर. अब शो हो रहा है पीपीटी? सर पीपीटी अभी लोड हो रहा है सर. वीडियो ऑफ कर लेते हैं. हाँ हाँ बिल्कुल. Yes, sir. Now it's visible. अच्छा अच्छा, मैं वीडियो ऑफ कर लेता हूँ तो ज्यादा बेटर रहेगा. हाँ,
तो पीपीटी देखिए, पीपीटी विजिबल है? Yes, sir. Yes, sir, it's visible. अच्छा अच्छा, तो देखिए कितनी सारी इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो इस फील्ड में हैं। देखिए मेरे ख्याल से करीब 25 से 30 इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो इस तरह के वर्क में इन्वॉल्व हैं। जनरल इंश्योरेंस में, है ना, जो मोटर व्हीकल इंश्योरेंस होता है, हाउस इंश्योरेंस होता है, शॉप इंश्योरेंस होता है ना, इस तरह के जो होते हैं उसमें इन्वॉल्व होते हैं, उसमें ये सब सारी जॉब्स आपके लिए अवेलेबल है। बशर्ते आपको डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन आना चाहिए, आपको फिंगरप्रिंट एग्जामिनेशन आना चाहिए, आपको क्राइम सीन प्रोसेस करना आना चाहिए, है ना, क्राइम सीन कैसे परफॉर्म करते हैं ये आपको आना चाहिए, ठीक है ना, तब इस तरह की जॉब्स आप ले सकते हो, है ना। और थोड़े कहीं बीएससी खत्म करने के बाद आप कहीं अटैच हो जाए, किसी एफएसएल से अटैच हो जाए, तो इस तरह के जब आप एक्सपीरियंस गेन कर ले 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने का, तो थोड़ा ज्यादा इजी हो जाता है। ये देखिए कितने सारे आपके इंश्योरेंस कंपनीज हैं। ये जो वेबसाइट है ये इंडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट की। आप इसमें जाएंगे तो बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, आपके सब सारी चीजें। अब इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें जो फोरेंसिक साइंस, प्राइवेट जो फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज हैं, अभी दिल्ली में कुछ काम कर रहे हैं, कुछ मुंबई में है, आपके कुछ कैलकाटाज में है, और अलग अलग स्टेट्स में है। तो वहां आप एज अ फोरेंसिक साइंटिस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, एज एक्सपर्ट ज्वाइन कर सकते हैं। या जो लॉ फॉर्म्स होती है ना, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, तो उसमें आप एज अ फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट या डॉक्यूमेंट एक्सपर्ट या फोरेंसिक एक्सपर्ट आप वहां पे जॉब ऐसा ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपके हायर स्टडीज की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे कि आप पीजी करने के बाद, एमएससी करने के बाद और पीएचडी करने के बाद क्या आपके लिए वेन्यूज ओपन होते हैं, क्या क्या वेन्यूज हैं, वो हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में उसको कंटिन्यू करें। ये हम पीजी डिग्रीज की बात कर रहे हैं। पीजी डिग्री मतलब कि एमएससी इन फोरेंसिक साइंस या डिजिटल फोरेंसिक्स है, या भी और भी जो है आपका, तो वो जब इस तरह के कोर्सेज आप करके जब आप, तो उसके बाद आपके पास क्या वेन्यूज अवेलेबल है, तो जो मैंने आपको पूछा थी उसके अलावा जो एडिशनल है वो मैं अभी आपको डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे अच्छा ये होता है कि आप जो लेबोरेटरीज हैं उससे ज्वाइन कर जाएं, इंटर्नशिप कर लें, और फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज में जो सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर की जो पोजीशंस होती है, या जेएसओ की जो पोजीशंस होती है, जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर की पोजीशंस होती है, पीएससीज जो पब्लिक सर्विस कमीशन है अपनी अलग लिस्ट स्टेट्स की ना, 28 या 29 स्टेट्स हैं उनकी, और यूपीएससीज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तो वहां से जेएसओ की पोस्ट आती है, जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर या सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट आती है। तो उस पर आप ज्वाइन करके आप नौकरी ज्वाइन कर सकते हैं जब आप फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में जॉब करना चाहते हैं। इसके अलावा आप अगर नेट क्वालिफाई हैं, नेट क्वालिफाई कर लेते हैं, यूजीसी नेट क्वालिफाई कर लेते हैं या पीएचडी कर लेते हैं, तो आप बहुत सारी यूनिवर्सिटीज इस समय खुल रही है, यूपी में है, इंडिया और बहुत सारी स्टेट्स में, जितनी भी स्टेट्स हैं, जिन स्टेट्स में नहीं है वहां आजकल आ जाएंगी, 2-4 सालों में आ जाएंगी। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट या जो भी लेवल है आपका, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। प्लस जो प्रोफेशनल जॉब अपॉर्चुनिटीज है आफ्टर पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन, वो फॉरेन में बहुत सारी हैं, वो मैं अभी डिस्कस करूंगा आपको। वो बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज है, बहुत अवेलेबल भी हो, ठीक है ना, ये हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, ठीक है। प्लस एमएससी करने के बाद आप रिसर्च ज्वाइन कर सकते हैं ना, एज अ रिसर्च असिस्टेंट है, या प्रोजेक्ट असिस्टेंट है, या रिसर्च एसोसिएट है ना, यूनिवर्सिटीज में मिलती है ना, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में है, इवन फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज में भी मिलती है, ठीक है ना। तो वहां आप ऐसा रिसर्च असिस्टेंट ज्वाइन कर लेते हैं, 50,000, 40,000, 60,000, है ना, इस तरह का आपको रेम्युनरेशंस मिलेंगे। फॉरेन में भी इस तरह से, फॉरेन में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे भी बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं जो फोरेंसिक साइंस में रिसर्च करते हैं, कराते हैं,
विद स्कॉलरशिप्स, ठीक है ना। और ये आपका यूजीसी डीएसटी है, सीएसआईआर है, ठीक है ना। तो जेआरएफ निकाल के आप यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन होता है, जेआरएफ निकाल लेते हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिलने लगती है 30-40,000 रुपीज। आप किसी यूनिवर्सिटी में ज्वाइन कर लीजिए, आपको पैसे मिलने लगेगा, आपका हो रहेगा। उसके बाद जो असिस्टेंट प्रोफेसर की या रिसर्चर्स की, साइंटिस्ट की पोजीशन मिलती है, वो आप टेक ओवर कर सकते हैं, ठीक है ना। प्लस यहाँ फिर से वो फील्ड ओपन हो जाती है जब आप प्राइवेट प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो यहाँ मोर एम्फेसाइज्ड हो जाता है, ज्यादा एक्सपर्टाइज हो जाता है और ज्यादा एवेन्यूज खुल जाते हैं। डॉक्यूमेंट ऑफ फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की बहुत ज्यादा मांग है। इवन से रिलेटेड इवन रवि सर बहुत अच्छा आपको उसमें आपको बता पाए। उसमें जॉब्स बहुत है, जो साइबर फोरेंसिक है या डिजिटल फोरेंसिक्स है, उसमें इस समय बहुत, इवन इधर बेंगलुरु साइड और इन सब जगहों पे बहुत जॉब्स अवेलेबल है। इंटरनेट सिक्योरिटी पे है, बहुत सारे पे इसको मूव आउट कर सकते हैं बेटर, ठीक है ना। हम लोग जॉब पोजीशन साइंस लेबोरेटरीज आउटसाइड इंडिया की बात करते हैं, एक है जो अमेरिकन एकेडमी ऑफ फोरेंसिक साइंस जिसको बोलते हैं, और एक फोरेंसिक कनाडा की है। दो वेबसाइट्स ऐसी जहां पे भरपूर आप मिलेगी और हमेशा थ्रू आउट द ईयर ओपन रहता है, नई नई जॉब्स पोस्टिंग वैकेंसीज आती रहते रहेंगे। और कुछ भी, मेरा यकीन मानिए, कुछ भी एडिशनल नहीं है। आपके पास जो पीजी की डिग्री है, एमएससी की डिग्री है, दैट इज सफिशिएंट। एडिशनली आप फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में कहीं इंटर्न कर लेते हैं, कहीं ट्रेनिंग कर लेते हैं, तो वो एडिशनल होता है, एडिशनल बेनिफिट्स होते हैं उसके, ठीक है ना। वो ज्यादा बेनिफिट करता है। या किसी इंस्ट्रूमेंट में आप बेहतर हो जाएं, जैसे एचपीएलसी है, टीएलसी है, जीसी है ना, वीएससी है, इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स में आपकी एक्सपर्टाइज होगी, तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आप वहां पे एज अ साइंटिस्ट जो है ज्वाइन कर लें। और फॉरेन में जो 9/11 हुआ था उसके बाद से थोड़ी सी दिक्कतें आई, अदरवाइज उससे पहले तो धुआंधार जॉब्स मिलती थी। इवन मैंने भी कई बार ट्राई किया, और क्योंकि मुझे थोड़ा ठंड से डर लगता है तो मैंने ऑप्ट नहीं किया, लेकिन बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं और ये इस वेबसाइट से आपको मिलेंगे। सिंपली आपको इस वेबसाइट पे जाना है, उनकी वेबसाइट्स को खोलना है और अप्लाई कर देना। मैं आपको 100% श्योरिटी से बता रहा हूँ ये कि आपको रिप्लाई आएगा, आपके एग्जामिनेशंस होंगे, आपके टेलीफोनिक इंटरव्यू होंगे, आपके रिटन एग्जामिनेशंस होंगे। अगर आप उसको क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपकी जॉब पक्की है, 101% पक्की। हमारे इंस्टीट्यूट से, हमारे डिपार्टमेंट से बच्चे गए हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये बहुत परफेक्ट जगह है जॉब्स के लिए, अगर आप बाहर अप्लाई करना सकते हैं। टॉफेल, जीआरई वगैरह इन सब की कोई जरूरत नहीं होती है। एमएससी सिंपली है, आप कुछ एक्सपीरियंस है, यू आर एलिजिबल, है ना। दे आर कॉलिंग ऑफ, और आपको पक्का 101% मिलेगा। ये देखिए कुछ जॉब पोस्टिंग्स है, डीएनए एग्जामिनर्स की है ना, लेटेंट प्रिंट एग्जामिनर्स की है ना, मिलती है, 100% मिलती है। सिंपली आपको कोशिश करने की जरूरत है, आपको अप्लाई करने की जरूरत है। मेरा यकीन मानिए, आती है, रिस्पॉन्सेज आते हैं, आपको बहुत खुशी होगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको एग्जामिनेशंस दोगे आप, जब टेलीफोनिक इंटरव्यूज होते हैं, रिटन एग्जामिनेशंस होते हैं, ऑनलाइन एग्जामिनेशंस होते हैं, हाँ, पर लास्ट में जब आपको इंटरव्यू देने जाना पड़ेगा तो शायद उनके प्लेस में जाना पड़ेगा, बट दैट इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम ना। अभी कम्युनिकेशंस के इतने माध्यम हो गए हैं कि कोई इश्यूज नहीं आता, है ना। तो यू कैन अप्लाई। देखिए कितनी सारी पोजीशंस है, अभी ये ओपन पोजीशंस है, ठीक है ना। कुछ आज की है, कुछ कल तक की है, कुछ जुलाई तक की है, कुछ अक्टूबर तक की है ना, 2023 की है, बहुत सारी है। आप इसको अप्लाई, कुछ एडिशनल नहीं मांगते। आपकी पीजी जो एमएससी फोरेंसिक साइंस की डिग्री है, विद स्पेशलाइजेशन और विदाउट स्पेशलाइजेशन, सब एलिजिबल है। थोड़ा सा आप एक्सपीरियंस ले लो, फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी एज अ ट्रेनी ले लो, एज अ इंटर्न ले लो, यू आर एलिजिबल। सब हम मांगते हैं, आपको एडमिट करेंगे, आपको जॉब्स देंगे और बढ़िया जॉब्स देंगे, अच्छी पोजीशंस पे देंगे। एकदम आप निश्चिंत होकर आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए कितनी सारी पोजीशंस है, ये तो मैंने आज देखी है, इसको मतलब
अदरवाइज ये आप पर डे देखते रहिए, ये चेंज होते रहते, जो पुराने जॉब से वो हटते रहते, नए लोग पोस्ट करते रहते, है ना। देखिए बहुत सारी फोरेंसिक साइंटिस्ट की, टॉक्सिकोलॉजी की बहुत सारी पोस्टें हैं, आप इसमें अप्लाई करिए, डेफिनेटली मिलेगा, ये मेरा आपको मतलब 100% श्योरिटी। ये देखिए बताइए, इवन टीचिंग की पोजीशन आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल करिए, ये बहुत टीचिंग तो बहुत आती है, बहुत सारी पोजीशन आती है, ठीक है ना। एक दूसरी साइट है, ये देखिए फिजिकल साइंटिस्ट की, फिजिकल एविडेंस डीएनए एग्जामिनर्स की, लेटेंट एग्जामिनर्स, ये दूसरी साइट, आप नोट जरूर कर ले, forensics.c, पूरा भरा हुआ है इनकी वेबसाइट, है ना, जॉब से पूरी। आप, ये कोई फेक वेबसाइट नहीं है, इसमें मैंने अप्लाई किया हो, अप्लाई करके देखा हो, मेरे स्टूडेंट्स करते हैं, डेफिनेटली आप 101% आपको जॉब मिलेगी। आप इस वेबसाइट पे जाएं, जो रिक्वायरमेंट है इनकी वो उसको फिलअप करें, अपनी सारी क्वालिफिकेशंस फिलअप करें, आपको डेफिनेटली इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लेवल, 3 लेवल की कॉल्स आती हैं। फर्स्ट, थर्ड और 3 लेवल आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, आपको 100% जॉब मिलेगा। मैं आपको ये लिखित आपको आश्वासन दे सकता हूँ, एकदम 100%। ये देखिए बहुत सारी पोजीशंस, ये देखिए नीचे नेक्स्ट करके लिखा हुआ है ना, बहुत सारी है, मतलब नेक्स्ट पेज पे जाते जाएंगे, बहुत सारी लेवल्स है, बहुत सारी पोजीशंस है। ये देखिए बहुत सारी पोजीशंस है ना, फोरेंसिक अकाउंटिंग, बाप रे बाप, ये देखिए बहुत सारी पोजीशंस है, सोशल वेलफेयर, पता नहीं, नर्सिंग की बहुत सारी पोजीशंस आती है। अभी हम लोग थोड़ा सा पीएचडी की और मूव करेंगे, कि जब आप एमएससी करने के बाद पीएचडी जब ऑप्ट कर लेते हो, आफ्टर पीएचडी जब आप ज्वाइन कर लेते हो, पीएचडी आप थीसिस सबमिट कर देते हो, पीएचडी अवार्ड हो जाती है, डॉक्टरेट की डिग्री आपको मिल जाती है, तो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या क्या वेन्यूज आपके लिए खुलेंगे, ये थोड़ा सा हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो रिसर्च का आप जानते हो ना, इन्वेस्टिगेशन ऑफ प्रॉब्लम्स है ना, जनरल डेफिनेशन है, फाइंडिंग आंसर्स टू द क्वेश्चंस, ये थोड़ा सा रिसर्च से रिलेटेड है ना। वही प्रोबेबिलिटी वाला ना है, तो मैं प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ 0.05% से हमेशा इससे ज्यादा रहेगी नौकरियों की प्रोबेबिलिटी, जैसे रिसर्च में होती है ना, सेटिस्फैक्ट्री, नॉन सेटिस्फैक्ट्री, हमेशा इसमें सेटिस्फैक्ट्री ही रहता है, नॉन सेटिस्फैक्ट्री कभी नहीं जाता। कोशिश करने की जरूरत है, आपको अप्लाई करने की जरूरत है, आपको जो क्वालिफिकेशंस मांगते हैं, जो एक्सपीरियंस मांगते हैं, वो लेने की जरूरत है ना। रिसर्च को आप जॉब एज अ कैरियर बिल्कुल आप अडॉप्ट कर सकते हो, है ना। देखिए उसका रीजन है भाई, बहुत सारी रीजंस हैं क्यों आप एज अ रिसर्च या आफ्टर पीएचडी एज अ कैरियर अडॉप्ट कर सकते हैं ना। बहुत सारी वैकेंट पोजीशंस है ना, इंडिया में एज वेल एज फॉरेन कंट्रीज में, है ना। ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात है, फोरेंसिक साइंस ऐसी फील्ड है जहां एक्सप्लोरेशन स्टिल आप एक्सप्लोर कर सकते हो, पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं हुई, है ना। जैसे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स है ना, बहुत हायर लेवल पे, इंडिया में इतना नहीं है अभी एक्सप्लोरेशन के बहुत सारे चांसेस है ना। थोड़ा ज्यादा मेहनत करके बहुत अच्छी पोजीशंस पे आप पहुंच सकते हो, ठीक है ना। अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है इंडिया में अभी, तो ऑब्वियसली बहुत सारा है, अभी डेवलपिंग ब्रांच है इंडिया में, फोरेंसिक साइंस अभी डेवलप कर रहा है। पिछले 10 साल आप पीछे जाके देखिए, अब जो समय करंट सिनेरियो है या जो अगले 10 साल आने वाले हैं, बहुत सारे डेवलपमेंट्स होने वाले, तो बहुत सारा चीजें मतलब आपको अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली, ठीक है ना। ये आप आफ्टर पीएचडी क्या क्या कर सकते हैं ना, रिसर्च इंस्टीट्यूशन ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे एमएससी के बाद, ठीक है ना। प्रोजेक्ट्स में फंडेड प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, यूनिवर्सिटीज होती हैं, आपको फंडेड प्रोजेक्ट में ज्वाइन करा देंगे, है ना। जो प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी चलते रहते हैं, या आप खुद प्रोजेक्ट बनाए, उसको सबमिट करें फंडिंग एजेंसी पे, उस पे फंड्स लें, किसी के अंडर में काम करें, दैट इज रिसर्च असिस्टेंट अपॉइंट करते हैं ना, रिसर्च इंस्टीट्यूशन, रिसर्च एसोसिएट, उस पर जा सकते हैं आप, अपनी सर्विस प्रोवाइडिंग एजेंसी खोल सकते हैं। ये थोड़ा सा फंडिंग एजेंसीज है ना, डायरेक्टरेट ऑफ फोरेंसिक साइंसेज, बीपीआरएनडी है आपका, डीआरडीओ है, यूजीसी है, फंड करते हैं, हमेशा फंड करते हैं और जरूर फंड करते हैं, लेकिन उस लेवल का आपका प्रोजेक्ट होना चाहिए, उस लेवल का आपका काम होना चाहिए, ठीक है। जब भी आपका कुछ हटके काम होगा, मैं आपको गारंटीड दे रहा हूँ, इसमें एक एमएसएमई नहीं जोड़ा मैंने, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है ना, माइक्रो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज,
वो भी फंड करते हैं, 100% फंड करते हैं, लेकिन लीग से हट के काम होना चाहिए, टारगेट बेस्ड रिजल्ट होना चाहिए। टारगेट बेस्ड रिजल्ट समझ रहे हैं ना? टारगेट बेस्ड रिजल्ट ऐसा कि मान लीजिए आपने कोई ऐसी किट बनाई, नई किट बनाई, जैसे बेंजीडीन टेस्ट होता है ना, ब्लड का पढ़ा होगा ना, कार्सिनोजेनिक एजेंट होता है ना, तो कुछ ऐसा आप नेचुरल प्रोडक्ट बेस्ड एजेंट बनाओ ना, जो एक ड्रॉप डालने पे फट से ब्लड का रिजल्ट दे दे, है ना, कलर चेंज कर दे, और जो हाईली सेंसिटिव हो, है ना, एंड प्रोडक्ट बेस्ड, इस तरह से कुछ है आपके पास, ले आइए, फंड दिलाता हूँ मैं, कोई इशू नहीं है, कहीं भी फंडिंग एजेंसी में सबमिट करिए, पक्का मिलेगा आपको, 100% मिलेगा। अभी तो जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने बहुत एम्फेसाइज किया हुआ रिसर्च पे, आप एंड प्रोडक्ट बेस्ड रिसर्च लाइए ना, फटाफट जरूर होगा, है ना। ये जो पीएचडी के बाद जो रिसर्च फंडिंग अपॉर्चुनिटीज है ना, सांती स्वरूप भटनागर है, सीनियर रिसर्च एसोसिएट है ना, बहुत सारा है ना, विजिटिंग एसोसिएटशिप, CSIR के प्रोग्राम्स है ना, बहुत सारा आप जा सकते हो उसमें पोजीशन में। MCI देती, मेडिकल कॉलेज काउंसिल ऑफ इंडिया, भी नाम उसका चेंज हो गया है ना, वहां आप जा सकते हो। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर दे सकता है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी दे सकता है, बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च देता है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन देता है, अरे बहुत सारे देते हैं, है ना। आपका प्रोजेक्ट उस लेवल का होना चाहिए, है ना। फॉरेंसिक एम्प्लॉयबिलिटी बहुत है ना। आपको ये क्या कहते हैं उसको, इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च है ना, इसको आपको टारगेट करना पड़ेगा, इसको आपको फोरेंसिक से जोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल मिलेगा, बहुत मिलता है, बच्चों को मिलता है भाई, आप जैसे स्टूडेंट्स को मिला है, पीछे उठा के देखिए, बहुत बच्चों को मिला है। आप वेबसाइट जाइए ना, इनकी वेबसाइट पे जाइए, देखिए कितने प्रोजेक्ट्स मिले हुए, है ना, तो आपको भी मिलेगा, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है ना, मिलेगा, 100% मिलेगा। बट बेटा आपको लेवल वो लेना पड़ेगा, स्टूडेंट्स आपको उस लेवल पे आना पड़ेगा, ठीक है ना। बेनिफिट है, ये जो बेनिफिट अपॉर्चुनिटीज है, टीचिंग पोजीशंस है, असिस्टेंट डायरेक्टर्स है, पीएचडी के बाद जाइए ना ऑफिस में, असिस्टेंट डायरेक्टर बनिए, सीधा डायरेक्टर बनिए, कुछ एक्सपीरियंस ले लीजिए, जाइए, निकलता है बने, है ना। रिसर्च कोऑर्डिनेटर्स है ना। ये हम लोग थोड़ा सा एक टॉपिक था, फोरेंसिक एंटरप्रेन्योरशिप था। एंटरप्रेन्योरशिप ये कि भाई आप गवर्नमेंट से फंड लेके, है ना, कुछ ऐसा स्टार्टअप करें, कुछ ऐसी चीजें बनाएं, या कुछ ऐसा फैक्ट्री डालें, या कुछ ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाएं जो मनी अर्न कर सके, ठीक है ना, इन टर्म्स ऑफ वेल्थ, है ना, ताकि आप अपने आप को नरिश कर सके, गवर्नमेंट को दे सके, है ना, इस कंट्री को कुछ दे सके, लोगों को एम्प्लॉयबिलिटी दे, है ना, एम्प्लॉय करे लोग, है ना, ये एंटरप्रेन्योरशिप होती है। थोड़ा फोरेंसिक साइंस की फील्ड में थोड़ा सा ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि नई फील्ड है, इतना एक्सप्लोरेशन इंडियन लेवल पे नहीं हुआ है अभी। जो हमारे पास जो चीजें हैं मैक्सिमम फॉरेन कंट्रीज की हैं, है ना। आप VSC देख लीजिए, ISTA देख लीजिए, है ना, GC देख लीजिए, HPLC देख लीजिए, सब तो हम फॉरेन से मंगाते हैं। अरे भाई किसने मना किया है, आपने इंडिजिनस डेवलप करो ना, ठीक है ना, GC डेवलप करो, है, फिंगरप्रिंट के इक्विपमेंट्स हैं, क्राइम सीन के इक्विपमेंट्स हैं, टॉक्सिकोलॉजी के इक्विपमेंट्स हैं, विसरल एग्जामिनेशन के इक्विपमेंट्स हैं, है ना, इधर फोरेंसिक केमिस्ट्री के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, करो ना, किसने मना किया है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना, ये अनटच्ड फील्ड है, अनटच्ड है, अनएक्सप्लोर्ड फील्ड है ना। करिए आप इसको, है ना, करिए, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है ना। ये देखिए सेक्शन यूनिट्स को लीजिए, बहुत ज्यादा लग रहा है आपको, है ना, लीगल एडवाइजर बन जाइए, ये देखिए ना, प्रोवाइड लीगल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करिए, है ना। न्यू एजुकेशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस, हाँ जस्ट मैं खत्म करने वाला हूँ सर, 10 मिनट में खत्म कर दूंगा, है ना। रिसर्च इंस्टीट्यूशंस आप स्टैब्लिश कर सकते हैं, ठीक है, नए रिसर्च कैरी आउट कर सकते हैं ना, नई नई इंडस्ट्री स्टैब्लिश कर सकते हैं ना, जैसे गुड्स बनवाने की इंडस्ट्रीज है ना, और ये देखिए ना, क्राइम सीन इक्विपमेंट से रिलेटेड इंडस्ट्रीज है ना, तो इस तरह से चीजें आप कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलप, अरे भाई सॉफ्टवेयर आप कर सकते हैं, क्या कहते हैं, जो अभी हम इतना फॉरेन, जो भी सॉफ्टवेयर हम लोग कंप्यूटर फोरेंसिक्स से रिलेटेड सॉफ्टवेयर है ना, सब हम बाहर से एक्सपोर्ट कर रहे हैं भाई, वो करिए आप, उसको डेवलप करिए, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज इसको करिए, है ना। और आपके टीचर्स हैं, सर हैं, मैं हूँ, कभी भी कोई भी जरूरत पड़े आप वो करिए और कैरी आउट करिए, कोई दिक्कत है तो मैं भी हूँ, और अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपली कोशिश ये करने की जरूरत है कि आपको, आप जो पढ़ रहे हैं
चाहे वो ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, जो चीज भी कर रहे हैं अच्छे से करें, अच्छे एक्सपीरियंस लें, अच्छा नॉलेज होना चाहिए। देखिए अपॉर्चुनिटी अपने आप को प्रूव करने के लिए आपको एक ही बार अपॉर्चुनिटी मिलेगी, 10 बार अपॉर्चुनिटी नहीं। और जब भी अपॉर्चुनिटी मिले उसको प्रूव करिए अपने आप को, आप करके दिखाइए चीजों को कि आपको आता है, यू कैन डू द जॉब, ठीक है ना। और बेस्ट विशेस, और आप जहां भी जाएं आपको अच्छी नौकरियां मिले, है ना। थैंक यू वेरी मच। करीब करीब मैंने सारे जो टॉपिक्स थे तो मैंने कोशिश करी उसको कवर करने की। होप कि आपको थोड़ा सा इंसाइट मिला होगा, क्योंकि मेरा इसलिए ज्यादा एम्फेसिस रहता है क्योंकि मेरे यहाँ भी जब स्टूडेंट आते हैं, नए नए ज्वाइन करते हैं, तो पहला लेक्चर जो उनका ओरिएंटेशन का होता है उनमें बहुत सारी क्वेरीज रहती हैं, बहुत सारी क्वेश्चंस रहते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उनके क्वेश्चंस को सेटिस्फाई कर सकूँ, उनको के जॉब के प्रोस्पेक्ट्स के बारे में बता सकूँ, उनको थोड़ी सी राह दिखा सकूँ। यही मेरी कोशिश। थैंक यू सो मच। Thank you so much, sir. Students, the questions and answer sessions are now open for you. You can ask and drop the message in chat box. हाँ प्लीज स्टूडेंट, आप पूछेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मैं भी थोड़ा सा आपको बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊंगा अगर कुछ छूटा हुआ है तो। एवेन्यूज बहुत ज्यादा हैं, बहुत अच्छे एवेन्यूज हैं। थोड़ा सा आपको एम्फसाइज ये करने की जरूरत है कि मास्टर ऑफ वन बनने की जरूरत है। फोरेंसिक साइंस में बहुत सारी फील्ड्स हैं, आप पढ़िए सारी फील्ड्स को, लेकिन कोशिश करिए कि एक फील्ड में आप मास्टर जरूर, चाहे वो एनालिटिकल केमिस्ट्री ही क्यों ना हो, है ना। इंस्ट्रूमेंटेशन बेस कर लीजिए अपने आप को, HPLC सीख लीजिए, GC सीख लीजिए, इस तरह के इंस्ट्रूमेंट सीख लीजिए। देखिए मिलती है जॉब में, मैं गारंटी दे रहा हूँ, मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको मिलती है जॉब, उनको मिली है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में है, फर्टिलाइजर्स में, अरे बहुत सारी जगह है भाई, क्वालिटी कंट्रोल में बहुत नौकरियां मिलती है। आप मतलब बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आई नो इट वेल। एनी क्वेश्चंस बेटा, आप पूछिए, पूछिए, शर्माइए नहीं, पूछिए। पलक, मुझे लगता है कि इन्होंने सारा कुछ सीख लिया है मुझसे, नथिंग टू लर्न मोर। तो Okay, thank you so much, sir. On the behalf of entire Institute of Forensic Sciences, as a student coordinator of Value Added course, I'm glad to express my vote of thanks. A special thanks to our eminent speaker, Dr. Love Keshwani, for accepting our invitation and for being here with us today. Your thought have truly inspired us. The sessions were really very insightful and interesting. And I thank you from the bottom of my heart. And I would like to thank the program director, Professor K.V. Ravi Kumar sir, all the faculty members of AIFS for giving me this opportunity. At last, I would like to thank the organizing team members and the technical team of AUUP. Good evening, have a good day. We will be joining tomorrow at the same time with a new technical plenary sessions, and I request to IT member to stop the recording.